फिर आपको स्टेज पे जाना है। ये केवल लड़की की फोटो है आपके पास? नहीं, फर्स्ट टाइम देना है तो फॉर्म पूरा भर के सामने रिसीव करवा रहे हैं। ठीक है, वहीं भर लीजिए। आपसे कुछ देर में टाइम पर करके शुरुआत होने वाली है। प्लीज रजिस्ट्रेशन कराएं, रजिस्ट्रेशन फ्री होगी। एंड एट रजिस्ट्रेशन काउंटर में यहाँ लिस्टें तैयार हो गई है। आप पूरी लिस्ट के आधार पर हम लोगों को बुलाना शुरू कर रहे हैं। आगे सूचना के हम आपको बताना चाहते हैं हमारे सब्सक्रिप्शन पैकेजेस के बारे में। यहाँ प्लैटिनम प्लस है 13 महीने के लिए 4,250 रुपये में, फिर है गोल्ड प्लस 4 महीने के लिए 2,250 रुपये में, जहाँ पे आप 400 अन्य व्यक्तियों के कॉन्टैक्ट के साथ साथ प्रिंट ऐड पाएंगे हमारे अखबार में। हॉट सीट पर हम आपको एक माइक देंगे। जब आप यहाँ पर आए तो प्लीज जरा लाउडली तेज से अपनी बात बोलें ताकि बाकी लोग आपकी बात सुन सके। टेक्निकल पीपल कैन आई हैव अ माइक? अब जरा कोई लड़के को बुलाते हैं। सीरियल नंबर G1 राजीव वालिया। राजीव वालिया, वेलकम सर, नमस्कार। Hi, I'm Rajiv Walia. My name is Sujata. I'm Seema Sharma. Jinder Jaiswal. Sandeep Arora. Namit Sheth. Akanksha Chawla. And I came here for the matrimonial purpose of my daughter in question. Date of birth is 30th June 1984. Place of birth is Delhi. 11:55 रात का उसका जन्म है. I am 25 years old. She is not short, but she is not very tall. My height is 5'1", complexion is fair. Simple, good looking, beautiful, smart, slim, good nature. She looks more than 10 years younger to her age. Pure vegetarian. I'm a non-smoker. I'm just a very simple and fun-loving person. Believes in modern outlook with respect to traditions and values. मैं मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। Basically, I've had all convent education. Hobbies, drawing and painting. Son is also international swimmer. And then he was posted to USA. लगभग 3 लाख का पैकेज है उसके पास। 6 lakh plus का package है. 25,000 per month. She owns a car. We don't want any dowry. And I'm also like to point out that I'm Anshik Manglik. No problem. Of course, I almost forgot to mention 4 of my maternal uncles. They're all settled in the US. They're US citizens. कहाँ है मिठाई? Getting married nowadays is like advertising yourself. So it's like the girl's the product and the guy's family is out there to buy it. It's been an interesting journey searching for guys because मेरे रिश्तेदार of course बहुत टाइम से पीछे पड़े हैं. My mom has been surprisingly the cool one in the family. पर हाँ, रिश्तेदारों को बहुत प्रॉब्लम होती है. So they'll call me up and call up my mom. कोई लड़का मिला, कब शादी कर रहे हो, कब शादी कर रहे हो, कब शादी कर रहे हो, when are you getting married, when are you getting married? क्यों नहीं कर रहे हो? शादी कर लो, शादी कर लो. शादी नहीं कर रही है ऐसे कैसे? अगर करनी है तो अभी कर, और नहीं करनी है तो फिर बता दे, फिर हम लड़का नहीं ढूंढेंगे, फिर नहीं होगी उसकी शादी जिंदगी भर. कैसे मैंने कोई पाप कर दिया शादी ना करके, पहाड़ टूट पड़ा कर देने का, शादी नहीं करेंगे, दुनिया बच्चों ना बंद हो जाएंगे, दुनिया नहीं चलेगी टाइप्स. सो वहाँ पे केस में आई हैव आंसर्ड बैक टू देम कि आंटी कर लूँगी, क्या टेंशन है, मेरे घर वालों को टेंशन नहीं है. सो दैट्स बीन अ टिपिकल रिप्लाई कि मेरे घर वालों को टेंशन नहीं है. सो या I'm a different character in my own self, I must say. I like spending time alone. I'm alone in that ways. But then I've got a dual personality. I have different mood swings.
But yes, I mean, who doesn't need somebody to share things with? So, I mean, I would love to go out alone, but किसी को shopping bags पकड़ाने की भी तो कोई होना चाहिए. So I guess why not? I started off this entire process of meeting guys because I thought, okay, now is the time when I want to settle down. But I did not want to give in to anybody's pressure. It's end of the day, it's my life. So अगर मैं अभी प्रेशर में आ जाऊंगी, okay, next बच्चे कब करने का प्रेशर है, एक बच्चा होगा, दूसरा बच्चे का कब प्रेशर है, तो मैं क्या पूरी जिंदगी दूसरे के प्रेशर में जाऊंगी. So I am independent. I have done things my way, and I don't think there's anything bad about it. टैनिंग काफी कम हो गई ना सब हाँ करने हाँ के बाद बहुत में. नेट हो गया बिल्कुल, जैसे गैप हुआ था हाँ. वो मेकअप हो गया था. मैट्रिमोनियल पर्पस के पाल लाने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है. पढ़े लिखे हो ना लिखे हो, जॉब करते हो ना करते हो, बट येस पाल लाना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. आई मीन द फर्स्ट थिंग दैट पीपल आस्क फॉर इज योर फोटोग्राफ. So either you go to a Lakshmi studio and get a photograph clicked and make sure that you look something which you otherwise don't. Otherwise, obviously, there have been instances when people just look at the photograph and they say, all right, no. You know, maybe because dark color hai, ya pimples dikh rahe photographs mein. Obviously, it's not airbrushed or anything, so I'm not a model. So I look the way that I look, and I'm comfortable in my own skin, but apparently other people are not comfortable with the way I look. So it's important that I look after myself and, you know, take care of my hair and skin and whatever. This one's fine, thank you. It is extremely frustrating and irritating, I would say, to be rejected on the basis of looks. It just does not make sense at all to me. I mean, I try to keep my mind open about it, and, you know, my mom tells me it's okay, you know, that's how everybody does, you know, that's how the society works. It's Indian society and everything, and every parent wants the best for the kid. But what's the best? I mean, what's the definition of best? I mean, just on the basis of looks, कमौलिका टाइप की अगर बहू घर पे आ जाएगी, she looks good यार, so वो चलेगी क्या? बट तुमको नेचर भी अच्छी चाहिए, तुमको लुक्स भी बहुत अमेजिंग चाहिए, सबको चाहिए लाइफ में, सब कुछ तो नहीं मिलता, तुम अपने घर में तो देखो एक बारी. सो इट गेट्स वेरी इरिटेटिंग एंड सिंपली बिकॉज सर फोटोग्राफ देख के रिजेक्शन हुआ था. ठीक है, ठीक है. अब ठीक है. लग रहा है ना वहीं पे. हाँ, बिल्कुल लग रहा एक तो मम्मा आपने बाल बनवा दिए हैं ना मेरी सारी पिक्स में, कैसी सी आई है. शादी के व्यू पॉइंट से तो ये बेस्ट रहेगा ना, बाल बनवा के कितनी अच्छी लग रही है. हाँ, मेरे दांत नहीं दिखने चाहिए थे. वो वाली फोटोज बिल्कुल नहीं. Desirable is not achievable, achievable is not desirable. The moment desirable becomes achievable, it's no more desirable. You know what I'm trying to say? At the moment, my life is absolutely full freedom. No answerability and no liability at all. Even my mom, she doesn't call me, even if I come late at night. So that's the kind of
lifestyle having at the moment. So it's quite convenient and enjoyable. Anushka, how many times have you been asked to traduce in Rwanda? A zillion. And what has been your answer? सब कुछ ट्राई कर लिया, मतलब शादी.com, जीवनसाथी.com, फ्रेंड्स के थ्रू, फ्रेंड्स के थ्रू, रिलेटिव्स के थ्रू, बट अभी तक कोई बात बनी नहीं है. मैंने अपनी पिक्चर लगाई हुई है, बहुत इंटरेस्ट आता है, लेकिन प्रॉब्लम ये हो रही है कि सारे जो इंटरेस्ट हैं वो 35 प्लस से हैं. मतलब गर्ल्स, आई थिंक 1 or 2% ऑफ द गर्ल्स वुड बी हु आर लाइक इन अर्ली 30s, अदरवाइज आई गेट ऑफर फ्रॉम either divorced or separated or in their late 30s or early 40s. It doesn't work for me, honestly. I'm 38. I'm gonna be 38 in December. I'm 37 at the moment. And see, if girls are in their late 30s or early 40s, it doesn't really bother me. But what bothers me about their physical appearance. Girls are not too conscious about their health these days, right? I mean, I get girls who are in their late 30s and they look like aunties. You know, I mean, it doesn't work for me. I mean, if they're in the late 30s, it's perfectly fine, but they have to take care about their physical appearance. After marriage, what happens is perfectly fine, but before marriage, the package has to be good. I'm 5'9". I'll prefer a girl who's around 5'2", 5'3". Should be health conscious. If she is into sports, is nothing like it, because I'm a sports freak. Okay. If she doesn't play anything, it's perfectly fine. If she's hooked to gym or something, some physical activity. If she's fair, is good, no doubt. Slim, good sense of humor, good to talk to. Should not be serious in life. I mean, I don't like people who are very serious, you know, or who give too much of gyan. It doesn't really work for me. If you really ask me from the core, then I would say physical appearance is the most important thing for me at the moment. She should be good looking. She has to be good looking, no doubt. मैं गाती भी हूँ, रिश्ते भी कराती हूँ. हम लोगों की समझ लीजिए चौथी पीढ़ी, तीसरी चौथी पीढ़ी इसी उसमें डली हुई है. किसी शादी में मैं प्रोग्राम करने जब जाती हूँ, किसी ने मुझसे पहले से जैसे कह रखा है कि वहाँ पे तुम जा रही हो, दिल्ली जा रही हो या अलीगढ़ जा रही हो, कोई लड़की देखना अच्छी सी तो बताना.
देने के लिए तो बहुत कुछ लोग दे देते हैं। ये तो उनके दिल पर है, दिल के ऊपर है या मर्जी हुई उनकी, कोई चीज दे दी, खुशियाँ है, ये तो खुशियों सोने का गिफ्ट या कपड़ा या पैसा, इस तरह। कभी कभी जेवर भी देते हैं लोग, ऐसी बात नहीं। कपड़ा देंगे उसके ऊपर जेवर भी रख के देंगे, ये हमारी खुशी है भाई। अच्छा रिश्ता देंगे तो अच्छा ही काम होगा। क्या खूबसूरती देखी, घरेलूपन देखा, पढ़ी लिखी देखी, फायदा देखा उसका, लड़की वही अच्छी जो लगी, परिवार को अच्छी लगी, बता दिया। फिर लड़की वाले ये सोचते हैं कि भाई हमें लड़के का बायोडाटा चाहिए, फिर फोटो चाहिए, क्या सर्विस है, क्या कैसी आमदनी है। दूसरा, मेरे बेटे की हाइट है 5 फुट 9 इंच, तो हमें 5 फुट 2 इंच से लेकर 5 फुट 6 इंच तक लड़की चाहिए। हाइट इज 5 फीट 9 इंचेस। मैंने तो फीते से नापा नहीं है। And she should be at least 5'4". तीसरी रिक्वायरमेंट ये है कि लड़की ऐसी होनी चाहिए कि जो कि सेटल हो, Basically professionally qualified. where the boy at least can look after his own expense. My preference would be Government servant from defense forces. Second thought will be given to MNC. Must be, with the IT field also, getting good salary also. Lawyer, of course, lawyer is preferred. We are not so keen she should be working. priorly he should be religious, With warm and understanding heart. Non-smoker or responsible, teetotaler ho. moderate, Should have high moral values. not very religious, who understand human relation actually. And the other criteria is that the girl should be willing to live in the US because women doesn't want to come back to India. Let me tell you one thing about my brother. He was born in India. We traveled outside the country when we were about 2 years of age. After then, we've been born and raised outside the country. I remember one of my uncles got married a few years ago, and they had some middleman to do the entire thing. Now, the corporate thing has come in, matchmaking, and I think it's a wonderful idea because you have someone who's already done the profiling, someone who's already looked into a few other things, and that's when they've got the matchmaking done. We're looking for someone more moderate, someone with new ideas, someone with an orthodox little background, and trying to collaborate the entire thing. We're looking for someone who's more valued, a family valued person. We're looking for primarily an Indian. ये वो नवग्रह पूजा वाली रूम है जिसमें वो बीज वगैरह बोते हैं। हाँ, फिर हाँ, वेरी प्रिटी। एक कस्टम होता है जिसमें शादी से पहले लड़का लड़की शक्ल नहीं देखते हैं, तो यहाँ पे पर्दे लगा दिया था इन्होंने। फिर मेरा भाई मनोज के पैर धो रहे हैं। अभी भी हमारे वो कस्टम्स में लड़की को गाय बना देते हैं, रस्सी बांध दिया, बाप रे, बस मजा आया था, मैं जोर से बाप, वो कहते हैं ना गाय को खूंटे से बांध दिया, रस्सी तुम्हारे हाथ में रेडी। मैंने कहा लड़की देना, मगर गाय दे दी मेरे को। ये बहुत अच्छी है, ब्लैक एंड व्हाइट में सब कुछ अच्छा है। Manoj knows Vimal very closely, what his choice is, and I have been more of a friend to him than the typical bhabhi kind of a relationship. Mamiji and Dadiji, both of them are looking for a girl as well. So our responsibility is to just shortlist based on certain criteria that he has given us, and the decision is going to be his totally. He is the one who has to make a decision that he wants to move ahead and make a commitment of marriage. We've gone to all the matrimonial or those marriage bureaus take place, and they'll conduct little programs that people from different communities come together.
We've been to those. We've even been to one of those Arya Samaj Mandirs. They conduct those marriage programs. We've been to those. We've been to Hyderabad as well. They conduct these at least once a year. We've gone to those. We've spread the news around all over our family members or anybody that we know, friends. We've spread the news around. And we've been looking around. Almost every Saturday and Sunday, this is what we do. Thank you so much. G38 Pranjal. G39 Nitin Puri. G41 Ravi Kumar. Hello everybody, I'm Dr. And how long? To settle abroad. So would you like to exchange details with us? यहाँ पर आपको रेजिडेंस हमारा द्वारका में है। द्वारका में एक घर हमारा वहाँ है, एक घर Hello, namaskar everybody. छतरपुर में है। आप हॉरोस्कोप वगैरह में बिलीव नहीं करते? We are Punjabi, मैच कराना है तो करा लीजिएगा। टाइम मैं आपको बता दूंगी, मैं फोन करके आपको बता दूंगी। Yeah, that's my number. That's my husband's number. तो पूछना था, आप अपनी फैमिली में किसी के लिए मैच देख रहे हैं अभी? We are about 200 people here, and we are totally into matrimony. Regularly, I'm sending proposals also. Last time also there was one profile of Rajesh Gupta. MBA फाइनेंस में किया हुआ है न्यूयॉर्क से। सर यहाँ पे एक पेरेंट्स मीटिंग करा देती हूँ और वहाँ पे बच्चे मिलते हैं। बट अपनी मदर से मेरी बात है जो बोल रहे हैं नहीं, अभी फोन पे बात करेंगे फिर अट्रैक्शन वगैरह हो जाता है, फिर बाद में प्रॉब्लम आ जाती है। बट अनफॉर्चुनेटली ऋतु डिडंट लाइक हिज फोटोग्राफ्स। इस पैकेज में हम लोग चार्ज करते हैं 1 लाख रुपीज़ एट द टाइम ऑफ एनरोलमेंट, 1 लाख रुपीज़ जब केस मैच्योर हो जाता है हमारे पास। We are very personalized in our services, and we are very professional. We talk about the class, the background, the status and everything. इसमें प्रीमियम वाली सर्विसेज सारी सेम रहती हैं। एडिशनल बेनिफिट ये होता है कि जो फैमिलीज आपको ठीक लगती हैं उनके घर पे हम लोग जाते हैं, उनका स्टेटस देखते हैं और उसके बाद एक इंसाइट क्रिएट करके देते हैं जिसमें कि उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में या उनकी जो भी इन्वेस्टमेंट्स हैं और फैमिली बैकग्राउंड है, सारा एक इंसाइट क्रिएट करके देते हैं हम लोग उसमें। जी, देन उसके बाद हम अदर सोर्सेज से भी आपके लिए Yes, we do have people like coming from abroad, and they are non-Indians and they want to get married to an Indian girl. Now, when we ask them, why do you want to marry an Indian girl? Because they say that they're looking for a sustainable marriage, and they feel that Indians are very sincere and they're very dedicated, you know, that's how they want to go into that. See, we have people from Russia, we have people from Italy, and we have people from Africa. A lot of Indians are there, but then they feel like they are a girlfriend material, but we are looking for a wife, you know, who's leading, you know, like a sincere married life and giving us children, and as a family, you know, we can go ahead. That's what. जी सर, हैव अ नाइस डे, बाय। सवेरे 11 बजे घर से निकल जाता हूँ। जहाँ जहाँ किसी के बुलाया होता है तो वहाँ जाके देखना होता है, लड़का लड़की बायोडेटा वगैरह लेते हैं, घर बार देखना होता है। अर्जुन प्रतीक डैडी का नाम बनवारी लाल। शौक था मेरा, मेरी दुकान कपड़े की थी चांदनी चौक में, तो वहाँ भी जो भी रिश्तेदार वगैरह कोई आते थे तो मैं उनके रिश्ते करवा दिया करता था। आगे अब उसकी एक हैबिचुअल रिटायर्ड लाइफ में हो गई। बीकॉम ही है ना? जॉब कितने कर रहे हैं? एशियन इंस्टीट्यूट हैं? एशियन इंस्टीट्यूट 8 जनता मार्केट। पंजाबियों में भी करवाए हैं, लोकलों में भी करवाए हैं, इंडिया से बाहर भी भेजी हैं बच्ची, मगर जानकारी के बगैर नहीं।
जैसे साउथ दिल्ली में चले जाइए, साउथ दिल्ली की हमें गारंटी नहीं होती कि इन बच्चों का क्या पोजीशन है। ऐसे ही वेस्ट दिल्ली भी है। इस वेस्ट दिल्ली में भी जो पॉश कॉलोनियाँ हैं, उनके बच्चों का कोई भरोसा नहीं है कि वो कहाँ क्या करते हैं। तो थोड़े हमें जब तक डीप नहीं जाना पड़ता है, जब तक किसी के बारे में पूरी जानकारी नहीं होती, कहते जानकारी अपनी हो तो आगे बढ़ो। हाँ, अर्जुन की एक फ़ोटो दे दो और अर्जुन की शादी मैं अपने हिसाब से ऐसी जगह करा दूंगा कि जहाँ क्या पता उसका हाथ पकड़ ले, परमात्मा करे उसकी लाइफ। हाँ बिल्कुल, फोटो उसकी देख लो कौन सी अच्छी है। नहीं, लगभग हमसे कई पूछते हैं कि भाई क्या लेते हो, तो हम तो यही बोल देते हैं कि अगर तुम्हारी श्रद्धा देने की नहीं है तो हम नहीं भी लेते। तुम्हारी श्रद्धा जो है उसके हिसाब से आप शादी, वो कई कहते हैं हम शादियों में इतना खर्चा करते हैं, हमें आपको देने में क्या तकलीफ है। तो कोई वो लिमिट नहीं है। चलो हम अर्जुन का परमात्मा करे जल्दी से जल्दी काम हो और सही हो। बिल्कुल, बस आजकल यही मैं जमाना चाहती है हूँ कि अपने पैरों पे स्टैंड हो जाए तो वो थोड़ा। अपने पैरों पे स्टैंड भी हो जाए और उसकी इच्छा जो कोई आज कसर खाए बगैर कोई काम होता नहीं। देखिए जी, मीटिंग जैसे आदमी होता है हम वैसे ही कराते हैं। एक ज़रा अच्छा परिवार है, मीडियम परिवार है तो रेस्टोरेंट में भी करते हैं, और अच्छे आदमी हैं तो आगे अपने घरों पे भी करवाते हैं। एक नॉर्मल आदमी होते हैं उनकी मंदिर गुरुद्वारे में भी करवाते हैं। लड़कियां आजकल मना करती हैं, हम मंदिर गुरुद्वारे में नहीं जाएंगे, रेस्टोरेंट वगैरह में, पार्क वगैरह में चले जाते हैं। कोई भी मंदिर हो, लड़की हील वगैरह उतार के जाएगी, उसके कद का पता ना लगे, इसलिए वो मंदिरों को नहीं पसंद करते। सिर ढकना होता है, उनके खुले बाल होते हैं, तो वो इसलिए मंदिरों में गुरुद्वारों में जाकर राजी नहीं होते। जो माँ बाप हैं जो बिल्कुल लो ग्रेड के होते हैं वो तो भले ले जाएं, आम मीडियम आदमी आज कोई भी जाकर राजी नहीं होता, क्योंकि वहाँ पब्लिक होती है। जैसे पब्लिक आदमी कोई हो तो पता लग जाता है सबको ये लड़का लड़की दिखने के लिए आए हैं, तो नर्वस हो जाते हैं। हेलो, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, मीटिंग में तो जो उधर से आ जाएगा ठीक है, आपकी मीटिंग करा दूंगा। देखो जी, कपड़ा तो जो है अगर लड़की का कोई भी रंग हो उस पर रंग लाइट ही चलेगा, पिंक हो, वाइट हो, क्योंकि वो रिफ्लेक्शन जो है लड़की के चेहरे पे सही आता है। डार्क कपड़ा मत डलवा के लाना, साधारण ऐसा मेकअप हो जो घर में नॉर्मल चलता है। I have met guys only in KFC till now. So if you're meeting a middle class family, you'll probably meet in KFC. If you're meeting a high-fi upper class family, you will go to a 7-star and you got to pay out. I'm yet to meet a family who's there on time. So everybody made us wait at least for an hour. I mean, 1 घंटा तो इंडियन स्ट्रेचेबल टाइम है, उतना तो लगाएंगे क्योंकि हम लड़के वाले हैं, एंड लड़की को टाइम पे होना ही होना है, एंड जब तक 5 कॉल्स नहीं चल जाएंगे तब तक वो लोग पधारेंगे नहीं। सो वो लोग फाइनली पधारते हैं, बैठते हैं, एंड थोड़ी सी बात होती है फैमिलीज़ के बीच में। व्हेन यू आर सिटिंग देयर, देन दे विल टेल द गर्ल एंड द बॉय टू probably move to another seat and have a more candid discussion about themselves. जब फाइनली बिल आता है तो सारे जितने टब्बर बैठे थे सबके आदमियों की, आई जस्ट रियलाइज के आदमियों की पैंट की जेब पता नहीं कहाँ पे होती है। इट्स अपेरेंटली अ वेल हिडन प्लेस विच इज़ वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड आउट, बिकॉज वॉलेट उनको मिलता ही नहीं है जेब में से कभी अपने। सो दे वर अराउंड 6 or 7 odd guys in the family, एंड किसी एक को अपना वॉलेट वो ढूंढते रहे कि कहीं पे तो निकल आए, बट नहीं निकल सकता था, वो गुम गया था वॉलेट। जब फाइनली नहीं मिला, मेरी माँ को 2 मिनट के अंदर अपने बड़े से पोते के अंदर से उनको अपना छोटा सा वॉलेट मिल गया था, बट उन सब आदमियों को पता नहीं जेब में कहाँ घुसा हुआ था वॉलेट, they just could not find it. So maybe they have got too many hidden pockets in the pants, I don't know, I'll have to check one day, but they could not find it. So you got to pay. So it's not a matter of $100 or $500 or even $50 for that matter, but you got to pay because you're the girl side.
a lot of discussions when you have with the parents of the future bride, they have a lot of questions as to why somebody is not married and he's beyond 30. So a lot of people, they have preset criteria about a guy's financial condition and his family status, and only then they want to move ahead and take the conversation forward. So I just fail to understand as to why anybody would like to know what our income is. So everybody is independent in the family, everybody is spending for themselves, irrespective of the fact that we all live together when we are in India. So the very question puts me off. I mean, are you here for a business or are you here for a lifetime commitment? लेकिन जब हम गर्ल्स की बात करते हैं या गर्ल्स के पेरेंट्स की बात करते हैं तो वो जानना चाहते हैं कि जो सैलरी पैकेज बताया गया है वो सैलरी पैकेज सही बताया गया है या नहीं बताया गया, एजुकेशन बैकग्राउंड सही बताया गया है या नहीं बताया गया। इंटीमेसी तो देखिए आजकल दोनों तरफ ही लोग देखना चाहते हैं, तो उसके लिए फिर प्राइवेट डिटेक्टिव को हायर करना पड़ता है। जो इन्वेस्टिगेशन आती है उसमें लड़की जानना चाहती है कि सासू माँ की कहते नेचर्स कैसी हैं। फादर इन लॉ की नेचर जानने के बारे में ज़्यादा कहते हैं लड़कियां इंटरेस्टेड नहीं होती हैं, ना उनके पेरेंट्स इतने इंटरेस्टेड होते हैं। वो कोशिश करते हैं कि अगर कहते हैं लड़के की सिस्टर है, अनमैरिड है, तो वो किस टाइप की नेचर रखती है, क्योंकि वो भी एक प्रॉब्लम क्रिएट करने की वजह बन सकती है लड़की के लिए। और आजकल जो सोसाइटी के चेंजेस की वजह से लोग ये जानना चाहते हैं कि उनके जो हस्बैंड होने वाले हस्बैंड है वो कहीं गे टाइप की उसमें मूवमेंट में ना हो। देखिए हमारे पास एक कहते हमारे क्लाइंट हैं सीजन मेल, वो आए थे, वो चाहते थे कि जहाँ उनकी शादी होने वाली है और उस लड़की के बारे में थोड़ा सा उसकी कैरेक्टर प्रोफाइल जानना चाह रहे थे, और ये भी जानना चाहते थे कि इन्वेस्टिगेशन में वो कहाँ मूव करती हैं, कहाँ जाती हैं, किन लोगों से मिलती हैं, किस टाइप की उनकी नेचर है, किस टाइप की उनकी हैबिट्स हैं। तो इन्फॉर्मेशन टीम से ये पता चला था कि कहीं उनके काफ़ी अच्छे फ्रेंड सर्कल्स हैं, तो कुछ फ्रेंड सर्कल में हमें पता चला कि कुछ उनके नियरेस्ट और डियरेस्ट दोस्त भी हैं। तो आज हम वही देखना चाहते हैं कि वो कितने नियरेस्ट और डियरेस्ट हैं। तो इसलिए हमने एक टाई में कैमरा लगा हुआ है हमारी टाई के अंदर, जो कहते हैं इतनी आसानी से नहीं दिखता, हमने उसको लगा रखा है। वहाँ जाएंगे, वहाँ एक कॉफ़ी लेंगे, उनके सामने बैठेंगे, आराम से कॉफ़ी पियेंगे, पूरी एक उनकी वीडियो बन जाएगी, उसमें क्लियर हो जाएगा कि हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो एविडेंशियली प्रूफ हो जाती है। यहाँ लगाता हूँ मैं, ठीक है ना। पहले आप अगर देखें तो मैट्रिमोनियल वेबसाइट ही नहीं हुआ करती थी। आज से 3, 4 साल 5 साल पहले कोई मैट्रिमोनियल वेबसाइट नहीं थी। आज वेबसाइट इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं, मैट्रिमोनियल वेबसाइट्स। अपना क्लिक किया, आपके सामने 50 कहते हैं प्रपोजल्स हैं, आप उनमें से किसी प्रपोजल क्लिक करते हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता होता कि प्रपोजल के अंदर जितनी प्रोफाइल के अंदर जो भी इन्फॉर्मेशन दी गई है वो सच है या झूठी है। ये सब चीज़ें फिर इन्वेस्टिगेशन करके पता लगाया जा सकता है। Wow, I like. But then the only thing they all write is they're all good looking, they're all well cultured, they're very well educated, and they're all from the middle class. And they're all from the high middle class. Family looking for an educated businessman. I mean, So they don't want to get married in the service class, so this match is just not for us. Let me show you a few I've got in my email. Dad had something that came to his email as well. And this is a girl from the US. She's a dentist in the US. I find her pretty okay. But then there's a little space between her teeth. If you look at that, you want to look at that space?
Yeah. Don't pay attention to such details. There's cosmetic dentistry, you can always fix it. Yeah. So However, see, I mean, as long as the girl is educated, as long as Vimal and the girl, they find compatibility in each other, I think we should overlook such small gaps. look at this. Life partner with whom my life fulfill and happy. What kind of happiness is that? What kind of fulfillment would you get? How do you Don't fulfill be your so life? critical about people, I'll Manoj. show you one more. I'll show you one more. Really funny. We want you to get married. We are your friends for many years now. What exactly we should look characteristics in a girl? How should I give an example? I mean, the example of a heroine won't do with us. Some very normal person will. Like her? Will that work for you? Well, it will work for me also. She works for him too. Literally, See, I said, I can't really explain that. I mean, it should click. You know, I should like her. But in the case of Simran, it clicked. What issues you had with her? Her height? Yes, of course. Yeah, have you seen your hair? Rajiv, Dare comment on someone's height? चलो हाइट तो कवर हुई थी नाप लेते और कोई प्रॉब्लम थी और कोई प्रॉब्लम नहीं थी. This is what I want to ask him. Rajiv, just let me know देखो और उसमें क्या चाहिए था. घंटिया नहीं बजी. It should click. What do you mean Have you click? seen that movie? नहीं, किसी लड़की में क्या किसी को चाहिए? देख के कुछ होता है. घंटिया बजेगी कुछ होता होगा. है. Exactly. तो कुछ होना चाहिए. तो अभी तो आपके साथ में एकदम हुई नहीं कुछ. नहीं कुछ नहीं हुआ. Remember that girl वो. Which girl? अरे what was her name? Air hostess. Air hostess one. She smokes. That's okay. You can anytime. No, I ask. cannot. I You can't. just say her once, she will stop. हाँ, No. just try once ना. No, it doesn't work Give like yourself that. a chance. No, it doesn't work like See, that. he has a A to Z of problems with the girls. S for smoking. तो ठीक है मतलब ये भी H for height. Something A to Z. We will. So. Oh, that one Goa What one. fun you have? Goa. Remember that girl? हाँ, she was. I liked her. तो प्रॉब्लम क्या थी? Problem ये थी Problem कि ये उस थी समय work कि ही we नहीं were हुआ. supposed to come back by next day, and she was working with the hotel. लेकिन तूने पहले हमें ये चीज क्यों नहीं बताई? We would have extended our stay. See, T for timing also. Slowly and slowly. A for A to age. Z. Age को कोई issue Age नहीं issue था. नहीं. Age Are you comfortable marrying a divorcee? Why? If I like the girl, I have no Why? issues. Yeah, I have no problem. नहीं? If I like the girl, I have no issues. Divorcee. Divorce is separated, I have no problem with that. Divorcee widow. See, you think marriage is the only... क्या तुझे प्रॉब्लम क्या? Widow. तुझे सब कुछ चलेगा? With a child. No, not with a child. Right. Child would work. This is not right. Why not right? Huh? Just for saying, I can write down anywhere that he will not. नहीं तूने मीनाक्षी के लिए सेट किया. तूने मेरे को आके बोला राजीव वो सरगम देखो मीनाक्षी से कह रही है बट वो डिवोर्स से मेरे को शादी मत करियो. याद आ गया तेरे को? मैंने divorce ही है इसलिए. हाँ मत करियो. यही बोला It था. was 10 years back. It was 10 years back. आप बता. अब I am कैसे okay with नाम divorce. He also separated also. I have absolutely no issue. That is okay for you. I have to but like for the girl. height of 5'1" is bad for you. But why can't we be choosy? I mean, I need to understand that why marriage is so important. That you have to do it just because your family is pressurizing you to do it. नहीं, अब तो It happens a lot of times. I mean, people you do already it said I want to get married because I feel lonely. at times. See, if I say today clearly that I really want to get married, no. Sometimes I'm pretty okay with my lifestyle. What is happening at the moment with me? I'm happy with my, single status. So you don't have an I'm urge to get confused. married. Obviously, there are times when I want to get married. There are times I don't want to get married. So I'm absolutely confused. Is it 70-30, 50-50? क्या दिखाऊं? तुझे क्या बताऊं? देता क्या चीज़ है? At times, people don't understand that we've traveled all our lives. We are not set to one culture. Nobody can call us Indians either. All of a sudden, somebody comes back and asks you, what's your go-through, what's your caste? I have never been able to answer. How does that matter?
At least you should accept us for who we are. We earn well, we're living well, everybody's doing well in our families. That should be the last criteria and the first criteria. It's also about, how young this couple is, and probably they're not just here on a serious business. I really want people to take us very seriously and not just reject us outright that, you're young, you can't make a decision for your brother. That's not true. लड़कियां मेरे को रिजेक्ट क्यों करती हैं? I think bald could be one reason. I live in Ghaziabad could be another reason. I think just 12 pass, I'm not even graduate could be another reason. I'm not really great looking or good looking kind of guy can be one reason. There are so many reasons which I understand. In my family, just me, my mom and Nani. So there's no male member. So if I say I belong to well-to-do family, that doesn't mean anything to them. From a good background, they basically mean तुम्हारे घर में 5-6 आदमी होने चाहिए. कुछ नौकरी पेशा, सरकारी जॉब में, जज हो, इंजीनियर हो, पुलिस में हो तो भी चलेगा, but आदमी होने चाहिए. Then of course, I've got a migraine problem. The guy's families at least have a problem with it, if not the guy himself. I wear spectacles. I'm wearing on that right now, but I have a number. They want somebody with a 6x6 perfect vision to check out the sun. Then on top of it, I've got epilepsy, which is under control. I just suffer from the word. I just suffer from the disease. It's just a word for me. It's controlled. I'm on medications for it and it has absolutely no side effects. But उतना सुनेगा कौन? Explain करने का time भी तो देना चाहिए. So जब ये ऑटो वाला भी टाइम नहीं दे रहा मुझे एक्सप्लेन करने का. So जब कोई सुनने को आगे एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते जब तक तो there's hardly anything that I can do about it. So yes, I'm a misfit. When you're talking to the girls, they are honest about their opinions. They are honest what they like in a guy, what they don't like in a guy. Yeah? See, any girl would prefer, if she has a choice of a guy, okay, both are absolutely same, nature-wise, they are well off, everything is same, it's just that one guy has hair, another doesn't have, they'll always go for a guy who has hair. There's no rocket science in it, I guess. Grooming part, we are top to bottom. Skincare, hair care, beauty, makeup, fashion updates, culinary skills, and then personal etiquette. When you are dealing with your in-laws, how you should, you can control your stress, ego, and your anger. It is just not only the biodatas. We have to work on individuals. So when they are meeting with their prospective grooms and brides, so they are more confident and selection average goes up. So you pick up your fork and your spoon. Do not make any noise with your cutlery and the cups. There are two ways of eating a sandwich. Now either we cut it like this and have one. Look at this. You put it, the fork is not like this. It's inverted, yeah, and you put this in your mouth. Okay, do not cut a very big piece. Like see now this piece of mine is quite big, so I'll have to really open my mouth really wide. So what I decide to cut it further and put it in my mouth. The girls they are coming from bigger town also, like from Radhabad, Meerut, Kanpur, Lucknow. A lot of girls are coming. Be very careful about how you pick up your cup and sip the tea. It has to be very deliberate. Your cup is a little tilted. See, I can see your cup a little tilted. It could, yeah, now it's okay. It could drop. And if you feel that you may not be able to manage too big a cup of tea and you know your hand may shake or something like that, it's better for you to have half a cup of tea. Yeah, turn it around. I am targeting elite class or top-notch families when you talk about big houses and industrialists. A lot of lives are associated with them. A lot of workers are working under them. And if their marital life is happy, definitely their business also boom, which affect their lives as well. So in one good marriage can give you good society. A good society can give you a good nation.
make sure the cup is put softly on the quarter plate. You can do it very delicately and in style. Now I hope you will be a good hostess, and of course you will serve a nice cup of tea over a table to your husband also when you get married. मैं लड़कियां नहीं पटा सकता, मैं चाह के भी नहीं पटा सकता। मेरे को लड़कियों को अप्रोच करने में मेरी लिटरली फटती है, आप कह सकते हो। मैं लड़कियों को अप्रोच नहीं कर सकता अनटिल अनलेस आई गेट अ सिग्नल फ्रॉम अ गर्ल। और लड़कियां भी सिग्नल क्यों देंगी, मतलब उनके लिए भी कोई रीज़न नहीं है ना। मतलब मैं शाहरुख खान या सलमान खान तो होने की, मेरे को देखते ही लड़की बोले कि पता नहीं रूम में कौन आ गया यार, मेरे को अप्रोच करना शुरू कर दे। तो इसलिए मेरी थोड़ा सिचुएशन थोड़ी सी सैड है। जितनी भी लड़कियों में मैंने इंटरेस्ट शो किया, मेरे को हमेशा रिजेक्शन मिला है। आई थिंक बाहर से तो मैं कहता हूँ कोई फर्क ही नहीं पड़ा, बट अंदर से बहुत फर्क पड़ता है। स्कॉच कोर्ट में जाके 2 घंटे एक्स्ट्रा खेल लेता हूँ फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए। So in case of Vimal, he is indifferent. For him, he is not there physically talking to people, so he is indifferent. So for him, it's another situation, it's another story narration that we're doing to him. So it doesn't matter to him. As long as he's not interacted with the girl, he's indifferent. I go for qualities of the girl. I mean, I would not make a judgment, I would not make a decision just by looking at the profile. I would want to meet, I would want to interact, and then make my mind up whether the girl is suitable for Vimal or not. In Manoj's case, a lot of times, the pictures are the main criteria. And let me clarify. He just would shoot down several proposals, which I think probably could be the potential brides. Probably she could be my potential sister-in-law. First time I got rejected and dejected, it was a different experience. I was quite surprised. Then I thought, okay, maybe that happens, you got to meet a couple of guys and all, but now that it's happened number of times, 5-6 times, and that too because of no valid reason as such, if somebody says, okay, our personalities didn't match or something, now that would have been a valid reason for me. But things like, Dusky, you've got a migraine, you earn much more than me, dude, that's your problem, not mine. Types. So that's not really my problem. So yes, it feels frustrating. It feels extremely frustrating and derogatory, to say the least. कई बार आप अपनी फीलिंग्स को खुद नहीं समझ पाते हो, मतलब आप पिन पॉइंट नहीं कर पाते हो कि आपको बंदा पसंद क्यों नहीं आ रहा है। आई थिंक सिर्फ आप फिर ऑब्वियस रीजंस ढूंढते हो कि मैं कैसे मना किसी को कर सकूं। तो हाइट कुड बी वन रीजन कि आई थॉट कि ठीक है, दिस इज द रीजन आई थिंक आई डोंट वांट टू मैरी हर। यार मेरे ख्याल से जब लड़कियां मेरे को रिजेक्ट करती होगी तो उनका भी तो कोई ना कोई रीज़न होता होगा जो मुझे बुरा लगता होगा या लग सकता है या डेफिनेटली लगेगा। ठीक है मैं गंजा हूँ, लेकिन अगर आपके मुंह पे कोई बोले कि आप गंजे हो तो बुरा तो लगता ही एंड ऑफ द डे कहीं ना कहीं। गुड लुकिंग होना चाहिए, ज्यादा खर्चीली नहीं होनी चाहिए। वो लड़कियों का ना देखता हूँ। I was looking for a friend primarily. वो मुझे ही देखे।
बीवी जैसे गर्लफ्रेंड ज़्यादा खूबसूरत होनी चाहिए, नहीं तो बंदा बाद में उसको प्यार नहीं करता, दूसरे के पीछे भागता है। I don't know, rich. जो खाना भी बना ले और डिस्को भी जाए. Mature enough to handle me. क्योंकि लड़कियों को भगवान भी नहीं चाहता कि उनको क्या चाहिए, सही बताया। He wants somebody who would bond with the family and be together as one. Oh, we definitely want an Indian bride. I'd like a love marriage. मैं लव करूँगा फिर अरेंज होगी वो। मम्मी पापा ने ढूंढा था, वही देख के आए थे और उन्होंने ही फाइनल किया था। खुद से ढूंढा 1 week. हाँ, नेट पे भी आज चीटिंग वीटिंग होती है, वो करते हैं। For girl, I want कि उसकी arranged marriage हो. For boy, it depends totally on him. I think also more people need to be aware of same-sex marriages and that it's possible. I want to get married, yes, but on my own terms. I want to get married when I want to get married, not because somebody is pressurizing me into getting married. शादियाँ होनी चाहिए. Marriage is a very precious thing. Is an institution to regulate indulgence. शादियाँ आसान होनी चाहिए, कम से कम खर्चों में होनी चाहिए, कम से कम मेहमान होने चाहिए, कम से कम जगहों में होनी चाहिए, कम से कम खाना होना चाहिए. होनी नहीं चाहिए भैया। आज़ादी है कि मतलब एक नहीं तो दूसरी से ही, दूसरे तीसरी से ही। उसको देख लो, सलमान 42 साल उसने अभी तक शादी नहीं करी। मेरी शादी तो 2 हो चुकी है। कहाँ मिठाई? मेरे ख्याल से बहुत सारे लोग शायद कॉम्प्रोमाइज़ करके शादी करते हैं, बट इफ़ आई फाइंड अ राइट पर्सन देन ओनली आई एम गोना गो फॉर मैरिज, अदरवाइज आई डोंट नो। कहाँ मिठाई? Hi guys, I hope you liked the movie. So this was our first screening. This movie was presented by PSBT. PSBT um, is a broadcasting organization that supports on makes movies on social issues and what's going around in the society. So the floor is open now for discussion and yeah. So guys, how do you like the movie? Like, what are the thoughts that came in your mind while watching the movie? Anyone? I didn't know that Me. private detective भी कोई चीज होती है marriage में. That one was really scary. that wasn't scary, that was a reality. हम पूछते हैं ना neighbor से कि please do let us know about that Background family. checks. What is that family background checks column? But like private detective was like too much, Yeah. you know. I was creeped out. कभी मैंने सुना नहीं था इसके बारे में. यहाँ पे भी सुनाई दिया कि क्या है ये. Agree. मुझे भी फर्स्ट टाइम ही मतलब ऐसा कुछ तो I didn't know that this kind of things was also happening. लकीली आप लोग अभी उस उम्र तक नहीं है जहाँ पे पता चलना चाहिए, but I think it's very common. It's quite horrifying, but it's true. People do check up and people find terrible things also. But that private detective ka Tashan was something else.
in this one. But that's how they are, I guess. Uh, in this movie, I got a view that not only girls but also boys both are treated as something like commodities. कि बजट रेंज होता है ना, इतने से इतने हाइट में चाहिए, इतने से इतने बजट का चाहिए, वो चलेगा, इससे ऊपर नहीं, इससे नीचे नहीं। तो एक वो चीज लगी। और फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ मूवी मेकिंग, फिल्म मेकिंग, काफी सारी चीजें थी कि अट्रैक्ट करा। लास्ट में लिखा है थैंक्स फॉर विजिट, और जैसे एडवर्टीजमेंट दी होती है ना मैरिजेस की न्यूज़पेपर में, वहां पर इंट्रोस दिया गया था। तो काफी ही अच्छा लगा मुझे तो मूवी देखने वाला। Also, there was this whole auction jaisa sa setup in which people would come and then specify their conditions. ऐसा पूरा स्टेज बना हुआ था and people would specify कि अच्छा ये conditions चाहिए. It felt like जैसे auction होता है and bidding होती है कि at this. Very weird. एंड वो वाला सीन भी कि जिसमें वो कहते हैं कि शादी से पहले पैकेज तो अच्छा ही होना चाहिए. दैट वाज रियली रूड. That was a derogatory से भी कुछ बड़ा वर्ड होता है, वो कमेंट था. इवन आई वाज गोइंग टू स्पीक अबाउट दैट कि पैकेज अच्छा होना चाहिए. आई डोंट नो व्हाट टू से, हाउ टू रिएक्ट ऑन सच कमेंट्स. I think Yeah, same. It feels like it made me disgusted because the way he was speaking, like it could be a good package. Like, how can you call a girl a package? और इस मूवी में जैसे शादी को एज ए लेजिटिमेसी दिखाया गया है कि अगर आप जन्मे हो तो आपको शादी तो करनी है एज ए प्री डिटरमाइंड गोल. मतलब सोसाइटी का प्रेशर है, स्टीरियोटाइप है 30 साल से पहले. I think the grooming up thing also was very scary and very triggering. Ki the bride and the groom is being groomed and manufactured किया जा रहा है एक set of norms, एक set of roles को. और उसके लिए हमारे पास ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं, मतलब जो ऐसे बनाते हैं, ऐसे चाय पीना और सैंडविच काटना सिखा रहे हैं उन्हें. So that is also very horrifying. I also didn't know that कि वो institute thing exists. आई ऑल्सो होती डिडंट नो हैं. कि ऐसा कुछ एग्जिस्ट करता है। And that was like, wow, कहाँ से? It's like a fictional book or something. और But पेट्रियार्की there से was भी this whole रिलेटेड था कि गर्ल को सिखाया जा रहा है ऐसे करना, बॉय को नहीं सिखाया मतलब जा it's रहा। like boys have an upper hand over girls हाँ, की उनकी मर्जी के अकॉर्डिंग, उनके प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग सब होगा. One thing that I noticed is like during the entire concept of marriage, the word like feelings, some romance, this is not discussed. Like what the other person wants, वो सिर्फ हम like एक क्राइटेरिया अपीयरेंस के बेसिस पे बनाया गया है एंड एक्शंस के बेसिस पर बनाया गया है. मोर ज्यादा इंक्लाइंड उस तरफ था rather than what a person wants in a person, the other person. सब कुछ मटेरियलिस्टिक बेस्ड था, Does it seem फीलिंग्स और इमोशंस तो नहीं। does it seem very alien to you? I mean, क्या ये चीज इतना ही अजीब है कि कभी नहीं हो सकता है? So, कभी कभी ऐसा होता है कि ये चीज इतनी अजीब है कि कभी हो नहीं सकती है. इन अ जमाना ऑफ डेटिंग एप्स और तरह तरह के और फोरा, डू यू थिंक दिस इज what is the life of यहाँ पे this must have been made in the mid early 2005 के आसपास मेरे को लगा ये बन रहा है. So उसके बाद भी अभी और भी ज्यादा in terms of internet and phone and that all that. So what do you think do you think these things still exist? Do you think that marketplace or that auction is there? What is your sense? शाहना, आई बिलीव कि ये चीज अभी भी है. लाइक इफ आई स्पीक अबाउट आवर जनरेशन इतना नहीं होगा, बट इफ आई टॉक अबाउट फ्रॉम माय पेरेंट्स पर्सपेक्टिव और माय ग्रैंड पेरेंट्स पर्सपेक्टिव, वो अभी भी है. इवन लाइक मेरे कजन के लिए लाइक लड़की देख रहे हैं एंड दे काइंडा रिजेक्टेड अ गर्ल ऑन द बेसिस ऑफ द हाइट कि इसकी हाइट कम है, सो नहीं.
Like they didn't even meet her, but just because उसका height mention था, this is like इतना, तो they were like नहीं नहीं रहने दो, we'll see other options. Like arranged marriages में I think काफी ज्यादा like बहुत सारे factors are determined. I think they're looking for बहुत a particular prototype as well. मतलब I don't know what the prototype is exactly, but सबके पास एक array of है characteristics है कि ये सारे match होने चाहिए. तो and it's everywhere. मतलब ये भी तो society पे ही बनी हुई है documentary and it's there in our society as well. So Yes. मतलब family को एक एक वो जो institution है family को reproduce करने का, वो बहुत बहुत सहज तरीके से ये लोग दिखाते हैं कि किस तरीके से we wanted the same thing. एक particular family चाहिए हमें, जैसे कि I think from the documentary कि जहाँ पे वो बोलती है कि मेरे घर में कोई मर्द नहीं है और हम 3 औरत हैं, तो इसलिए वो मुझसे शादी नहीं करना चाहता है. सो द थिंग कि वहाँ पे कोई अथॉरिटी फिगर नहीं है और कोई ओनरशिप की फिगर नहीं है वहाँ पे, तो वो भी है कि उस तरह की फैमिलीज में हम नहीं जाना चाहते. वी वांट अ प्रॉपर फैमिली जहाँ पे कॉन्जुगल रोल्स हों लोगों के, और उस तरीके के डायमेंशंस में हम रहें. Shreyasi, I think. Shreyasi wants to speak. Yeah, go ahead, Shashi. Shreyasi, she's gone. No. She has unmuted herself, but she's not audible. Acha. Anyway, anybody? shall I say? Sonali, followed by Manan. Yeah, in the movie they were also talking about many organizations like RSMRs and those things. My area also has that. So there are many. Like I also visited there for some function. So yeah, it's also there in today's time. And I also wanted to say that मूवी में सिर्फ गर्ल्स को सिर्फ उसको नहीं बोला कि ऐसी होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए. एरिया को भी, लाइक साउथ दिल्ली एंड वेस्ट दिल्ली में ऐसी होती है लड़कियां. आई एम फ्रॉम वेस्ट दिल्ली गाइस, तो मुझे कोई मिलेगा नहीं क्या? नहीं, वो बड़ा इंटरेस्टिंग था. दैट कैरेक्टर, ही इज रिटायर्ड एंड ही डज दिस. वो चांदनी चौक उसका के ये है, हॉबी वो है कह रहे ये. हैं कि अच्छा नहीं, उनको चेक करना पड़ता है क्योंकि बेसिकली वहां पे आई थिंक रिबेलियस बच्चे होंगे ना, मतलब वहां पे कुछ इधर उधर कर रहे होंगे, अपना लाइफ लिव कर रहे होंगे. तो वो जो कहते हैं, वो फैमिलीज जो कहते हैं, दे मे नॉट नो व्हाट द चिल्ड्रन आर डूइंग. दैट्स बेसिकली व्हाट ही सेइंग. जो पॉश कॉलोनियां हैं वहां पे ये है कि माँ बाप को पता भी नहीं होता, which is all right. I mean, that's not such a bad thing. But yeah, maybe if you go through this gentleman, then maybe there might be difficulty. Manan. हाँ, एक इंसिडेंट शेयर करना चाहूँगा. मेरी सिस्टर की मैरिज के लिए हमने शादी.com पे देखा. तो उनको चाहिए था कि वो एक डेंटिस्ट है, तो सिस्टर मतलब मेरी कज़न भी डेंटिस्ट हो, तो फिर मैरिज भी लेट हुआ एंड बाद में जाके दे डिवोर्स्ड. तो हमें बाद में पता चला दैट वो ऑस्ट्रेलिया रहते थे एंड ही हैज़ अ गर्लफ्रेंड प्रायर टू दैट, and he wanted to marry just so that he can marry again, he can divorce and he can marry the other girl. For that purpose he married my sister. और इतना डाउरी, इतना वो, तो it really hurt everyone. Yeah, that's It still terrible. I'm so persists in the sorry. society. Aryan. Okay, so my insight in this movie is like I'm not shocked, I'm not surprised because our society is deeply casteist and like we're really entrenched in our patriarchal norms. And I have seen documentaries like these, and even the OTT platforms like in Made in Heaven, there's a series on Amazon Prime which I would highly recommend. There's like a grooming session like of that female character who belongs to like some locality in West Delhi or something, and in that grooming session she is being made to how to use a knife, how to use certain things in high class society so that they can get married off in a good nice family. And she did. But the thing is, even in the upper caste and like really good families, there ceased to exist a lot of patriarchal norms and things, and she eventually had to divorce him. So this is something which is not really surprising. And according to what Manan said, like the Shadi.com thing, which is like blooming in our generation, I guess.
there's a new article going around at the shadi.com, and they extended its platform to LGBTQI community as well. I don't know if you have guys known it, but they have expanded this, right? It's a little controversial because the matchmaking site is known to be really problematic in terms of looking for a particular caste, looking for a particular amount of salary, of a particular amount of height, like Shruti said, and these are kind of things which will be enforced on our community as well. So I don't know, it's a blessing in disguise or something, but I want your opinion as well. So yeah. काफी बार फेक भी होता है शादी.com वगैरह पर. Anusha Mishra followed by Anushka. Yeah, I wanted to say I noticed three things. First of all, how marriage is perceived in our society as a sign of stability. Like इस particular age से पहले तो शादी हो ही जानी चाहिए और you're not settled in life. And दूसरा, how we look, मतलब कितने सारे requirements होते हैं when you're looking for a partner, and ironically, love या feelings are not one of them. So it makes me doubt, are we looking for partners as individuals or normal human beings, या हम लोग like objectify करके देख रहा है, you know, like saying it's like a business contract. It's not a bond of love. Adding to what Anusha said, starting में when they were like on the stage, it felt like कोई auction चल रहा है या कोई cattle show चल रहा है जिसमें they're like telling specifics कि ये biodata है, इतना ऐसे है, वैसे है. So it was like very weird. कि क्या हो रहा है? Anushka. So yeah, the thing is that all of these things that we know to be true, when when it's all shown at once, within the span of 1 hour, it comes, as something very overwhelming, and it's like, कहाँ फंस गए हैं? And the society in general is just, it's so terrifying. And another thing is that, um, so we've been reading Victorian novels in our course right now, and it's exactly the same. Nothing has changed at all. People are still looking for packages. लड़कों के ये फिक्स फीचर्स होने चाहिए, लड़कियों के ये फिक्स फीचर्स होनी चाहिए, and उससे ऊपर नीचे नहीं जा सकते. I mean, and again, like someone said, it becomes stability के लिए important to, just to maintain the basic structure of the society, so to say, because of course marriage is the smallest, I mean family is the smallest unit of the society, और उस society को maintain करने के लिए इनको शादियां करनी है. But it's terrifying that these marriages have to happen in such a way. Even जो online platforms भी हैं, they just replicate the same institution. ऐसा नहीं है कि वहाँ पे कुछ अलग choices मिल रहे हैं या वहाँ पे ज़्यादा freedom मिल रही है. It's just that उसको online एक जगह पे लाके जो cattle show जैसे offline चल रहा था वही online हो गया है. तो सेम डिटेल्स शेयर हो रही हैं, उसी तरह के जजमेंट्स हो रहे हैं. And someone was telling, I mean, someone was talking about it, that even if gay marriages are accepted in India at some point, the thing is that it would be replicated in exactly the same way as heterosexual marriages are happening. तो वो उसी इंस्टीट्यूशन में आके फंस जाएगा और फिर कुछ बदलने वाला नहीं है. Like, just this institution makes me so scared of marrying at any point of time. I'm like, even if it's a love marriage, also love marriages are not exactly love marriages in our society at all. वो अंत में arrange ही होता है because families मिलेंगी, same discussions होंगे. It's just that आपने खुद चुना है, but अंत में अगर family को नहीं पसंद आया तो नहीं होगी शादी. थोड़ा रोना पीटना होगा तो शायद मान जाए, लेकिन अंत में discussions उसी तरह के होते हैं जैसा किसी other conventional arranged marriage में होंगे. आई थिंक कि ये हमारे जनरेशन में लाइक थोड़ा थोड़ा रेप्लिकेट कर रही है बिकॉज लाइक आई ऑल्सो हैव फ्रेंड्स जो नहीं चाहते कि दे हैव बॉयफ्रेंड्स हु आर लॉन्गर हु आर शॉर्टर देन देम व्हेन आई आस्क देम द रीजन कि क्यों नहीं चाहिए देन दे आर लाइक इट विल नॉट लुक गुड एंड लाइक ये शायद रेप्लिकेट हमारे जनरेशन से भी होगा सो दैट्स व्हाट वी नीड टू स्टॉप I think we should थोड़ा सा focus करें on the film and then the issue separately of love marriages and marriages and on relationships, you know. So because I think there is a relation, there's a connection, but हम जब अपना बात रख रहे हैं तो I think it would be good to talk about the different things, right? And also I think when we're talking about gay marriage,
I think what you're problematizing, Aryan, is also the question of marriage itself or arranging a marriage, right? So I think if the same parameters work, whatever the sexuality, uh, there may be a problem, right? So I think thoda sa to understand it for ourselves, yeah. So there are many speakers, huh? Shreyasi had been trying for a while, and then Sonali, followed by Manan, followed by Shreyasi. Like they're in the order that way. Yeah. So I want to add. There was a scene in which one lady was saying, लड़कियों की तो अरेंज मैरिज होनी चाहिए लेकिन लड़की तो का तो चलो वो खुद डिसाइड कर लेती है girls can't decide. So that was a scene which I did like. उन्हें भी करनी चाहिए हम भी लव मैरिज कर सकते हैं. I think the movie also had like a lot मतलब काफी ज़्यादा triggering सा stuff. One of the मतलब बहुत disgusting सा scene was when there was this couple who were finding like literally hunting a like woman for the younger brother of that man. और फिर उसके बाद में वो क्या करते हैं, the woman she is showing pictures, album दिखाती है वो अपनी mother in law को शायद, और she shows that एक photo particular in which she says कि there is this tradition in her family जिसके अंदर the woman who is being married is like tied with a rope, yeah, the cow thing, and it depicts that the woman is a cow and the whole जो क्या बोलते हैं rope is in hands of the man, यानी कि हाँ कंट्रोल उस मैन के हाथों में ही रहेगा. And which was मतलब it says a lot मेरे ख्याल से it kind of summarizes the whole institution of marriage in just one scene कि how the man is supposed to be dominant and everything is supposed to be controlled by the man, right? And मतलब चीजें काफी blatant भी थी मतलब एकदम outright सा. The fact is it all happens around us. I mean, what is Anshika, तुम कह रही हो triggering तो पूरा मतलब the world is triggering for all of us. I think it's arranged. It's not so alien. That's the interesting part. It could be happening to people. You know, when we were in college, they were. I mean, that's 30 years ago. You know, more than 30 years ago, I graduated. When it's like ho gaya. But I'm saying the thing is that there were girls who were getting married in college. I have in since in KM in the early 2000s, mid 2000s also, I've had girls who got married while in college. Matlab yahi going through all this process while they are in college. So it may still be happening, you know, because college mein there are so many sections of people. It can still be happening. In school in +2 there were some business families where girls would in our days get married at 16. So it's not, I'm not talking about very old stuff also, I'm talking about like even now. This thing of a girl's marriage is always sort of looming large, right? So it's also not so alien. I mean, I'm saying that we can get triggered and we should get triggered, but then what we do about it is the question. मुंह छुपा के बैठने से नहीं होता है ना, मतलब the thing is that then how do you remedy, what do you do? That is the history of the institution, right? But then how do you proceed? That's also important. But there were many other speakers. Sorry, I just intervened because I was in that sense. Shana, you're on mute. Yeah. Manan. हाँ, 2-3 चीज़ें हैं। अ, एक तो ये कि शादी कराते समय ना काफ़ी फ़ॉल्स होप दिया जाता है। मतलब आई लाइक दैट कैरेक्टर वेरी मच जो 73 उम्र के थे। तो वो आ रहे थे बीच में कि लड़कियों को हम गुरुद्वारे में इसलिए नहीं मिलवाते क्योंकि वहाँ चप्पल उतारनी पड़ती है तो उसकी असली हाइट का पता चल जाएगा। वो डेल्टा एक्स वहाँ पर माइनस हो जाएगा। और एक चीज़ दिखी मुझे कि उसका कपड़े का रंग ये होना चाहिए ताकि रिफ्लेक्शन उस पर आए। अरे मतलब आई वाज़ लाइक कि क्या फ़र्क आएगा यार? आप फीलिंग देखो। और देयर वाज़ मतलब मेरे ही नोन में कोई हैं, मेरे साथ खेले हुए हैं वो बच्चे और मेरे से छोटी है वो लड़की, शी इज़ मैरिड और मैंने उसका एफबी पे देखा और मैंने मम्मी को कहा, "मम्मी मेरी मत कराना, चाहे किसी की भी हो जाए, मुझे इतनी जल्दी नहीं करना।" और उसकी ग्रैंडमदर ही वाज़ लाइक 20 और उसकी ग्रैंडमदर अभी से कह रही थी कि शादी कराओ, शादी कराओ, शादी कराओ। और उसके पेरेंट्स भी लिबरल हैं बट ग्रैंड-पेरेंट्स का प्रेशर आ रहा था, इवन इफ आवर पेरेंट्स आर लिबरल। तो उससे भी ओल्ड जनरेशन का प्रेशर आता है कई बार।
So yeah, these are my points. श्रेयसी। मेरी आवाज आ रही है पहले तो। हाँ हाँ जी। हाँ, ओके। तो ये सब जो बातें उसमें अपीयरेंसेस के बारे में और एक्सपेक्टेशंस के बारे में हो रही थी, तो ये चीजें ना डेटिंग कल्चर में भी रिफ्लेक्ट होता है बहुत बार, और स्पेशली अपीयरेंसेस वाला जो पार्ट है। और लोग जो जनरली हु आर नियर द एज ऑफ मैरिज अकॉर्डिंग टू द सोसाइटी, जो 26, 27, 25 ईयर्स के हैं, दे सीक पीपल हु फिट इनटू दैट क्राइटेरिया, ताकि अगर मैरिज होनी भी है तो उसमें डिफिकल्टी ना हो। Like they seek people based on criteria that is influenced by their family values, कि मुझे ऐसी बहू चाहिए, मुझे ऐसा तुम्हारे लिए हस्बैंड चाहिए। तो they automatically add those filters to their dating criteria as well, कि हाँ इस कास्ट की होगी तो शायद बाद में दिक्कत नहीं होगी, ऐसे दिखेगी तो बाद में शायद दिक्कत नहीं होगी। वन थिंग दैट आई नोटिस पर्टिकुलरली वॉज कि वो बायोडेटा जब बता रहे थे ऑन द स्टेज, लाइक कि हमारे कुछ रिलेटिव्स यूएस भी रहते हैं या फॉरेन कंट्रीज में भी रहते हैं, एज इफ लाइक वो एक सेलिंग पॉइंट है उनका, पॉइंट है कि अच्छा वो बच्चा वहाँ का है या उनके कुछ रिलेटिव्स वहाँ रहते हैं, तो उससे ज्यादा दे आर अप्रोप्रिएट। if anyone else have like certain scenes कि इसमें ऐसे था या some crucial points, तो they can like just put in। अनुष्का। आई थिंक मनन ने पहले हाथ रेज किया था तो। मनन then followed by। हाँ, एक पॉइंट था इसमें कि जब वो कैरेक्टर कहते हैं कि मैंने काफ़ी बच्चियाँ बाहर भेजी हैं, तो वो सीन एक मतलब एज़ अ प्रोडक्ट हाइलाइट कर रहा था कि मैंने काफ़ी सारा, जैसे एक वो होता है ना, दुकानदार कहते हैं हमने इतना माल बाहर भेजा है। तो इट वाज़ लाइक कि मैंने इतनी बच्चियाँ बाहर भेजी, और वो इट वाज़ रियली हर्टिंग। और उसमें मतलब काफ़ी जगह ये चीज़ आई है कि बाहर का है, और जब वो स्वयंवर वाला पूरा सीन था कि यूएस में है और मेरे इतने रिलेटिव्स यूएस में हैं, मतलब उससे यही दिखाना चाह रहे हैं दैट आई एम क्वाइट वेल ऑफ। तो ये सीन से मुझे रिलेटेड लगा। Related to that, I remember, or in the part where they're like, लोग बहुत जगह रहते हैं, घूमते रहते हैं, बट लड़की तो इंडियन ही होनी चाहिए। उसमें what he did not say is that because Indian girls are submissive, और वो बाहर हम उसको जैसे भी ट्रीट करें, हम यहाँ से लेके जाएंगे तो वो वापस तो नहीं आ पाएगी ना, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा। तो that something that actually does happen. We've seen so many shows and movies जहाँ पे NRIs are marrying Indian women, and they are no matter how they are treated. And another thing was that I mean, all of these characters, I mean, especially the people with the parents or families of the brides or the grooms, इतनी ज्यादा hypocrisy। मतलब हमारे बच्चे जैसे भी हो, हमें इंसान मतलब सामने वाला ऐसा होना चाहिए, particularly that guy of course, कि मतलब मेरी एज इतनी हो गई है लेकिन ये लड़की तो इतनी एज के कम ही होनी चाहिए, या अगर इतने एज से ज्यादा भी है तो दिखने में ना बूढ़ी नहीं लगनी चाहिए। I mean, like, have you looked at yourself? I liked it when the friend said कि तुमने अपने बाल देखे हैं। I mean, like, how can you have such expectations without even considering कि तुम्हारे क्या selling points हैं, in the same language selling points हैं। And then I mean, he's also sad कि पता नहीं मुझे क्यों रिजेक्ट कर रही हैं लड़कियां, and he forgets कि उसने कितनी लड़कियों को रिजेक्ट किया है on this on extremely similar points that he himself is sad about. Yeah, also, like, on the same note, कि people saying कि हमें तो ऐसी लड़की चाहिए जो कि मतलब kind of घरेलू हो, पारिवारिक हो टाइप, right? And what are the parameters of measuring the same, कि height ऐसी होनी चाहिए, color ऐसा होना चाहिए। I don't understand, like, तो how does all this physical appearance thing even factor into this, कि if the marriage will work per se or not? But also something I noticed, कि how the parameters are same and have been same for like such a long time. I think this has been going for generations and generations, and like hardly things have changed. Now people have started asking for educational
qualification, okay, but baki have has remained the same largely, right? Hmm. I Prerna really felt followed by bad, and I Manan. really felt sorry. I spoke in between, but there was a scene where the girl had epilepsy, and the parents rejected them on the basis of that she has a flaw, and she couldn't explain it Manan. further. And Hmm. epilepsy is like क्या बोलते हैं उसको stereotypical disease because सबको लगता है कि माथा चढ़ गया दौरा चढ़ गया that one. So yeah, like if you can't even explain them just because it's called a flaw in a society, it's really sad to see that anyone can get rejected on the basis of medical conditions. Prerna followed by Manan, followed by Sonali, Anushka, Shahana. हाँ, वन थिंग आई वाज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड इन द एंटायर डॉक्यूमेंट्री जिसका मुझे अभी भी समझ नहीं आया कि वो हो क्यों रहा था। उसने वो ऐसा बोला क्यों? दैट मैन जो स्विमर था, उसने बोला कि शादी के पहले उसको सुंदर होना ज़्यादा ज़रूरी है, शादी के बाद वो जैसी भी हो जाए, इट्स ओके। सो आई डोंट रियली मतलब आई अंडरस्टैंड कि देयर इज अ सेलिंग पॉइंट वहां पे कि मतलब आई थिंक मतलब जो मेरा परसेप्शन है उसको लेके आई थिंक कि लोगों को दिखाने के लिए मे बी कि मतलब माय पार्टनर इज ब्यूटीफुल एंड आई एम विथ हर ऐसे करके देयर समथिंग, बट आई डोंट अंडरस्टैंड कि मतलब व्हाट इज दिस थॉट। पर ये थॉट मैंने देखा है बहुत बार मतलब अपने घरों में कि मतलब शादी के पहले मतलब अब उस वुमेन के अंदर सब कुछ ठीक होना चाहिए, हेल्थ इशू, ब्यूटी स्टैंडर्ड, सब कुछ एकदम परफेक्ट होना चाहिए। उसके बाद इट्स नॉट अ बिग कंसर्न, इतना भी कंसर्न नहीं है कि हम मतलब उनके हेल्थ वगैरह के लिए कंसर्न रहे, वो भी इट्स नॉट अ बिग डील। तो दैट इज समथिंग आई नोटिस्ड। Okay, Prerna? I want to add to it Prerna's what she said that उसमें इसको इसी बात को एक जगह कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा था एक कोई कि वाइफ शुड बी ब्यूटीफुल देन गर्लफ्रेंड, नहीं तो वो शादी के बाद कहीं और अफेयर कर लेगा। तो आई थिंक दैट कॉन्ट्रडिक्टेड द दैट जो पहले उसने कहा कि शादी के बाद तो चलो वो कैसी भी दिखे शादी से पहले अच्छी होनी चाहिए। सो आई थिंक दैट वाज समथिंग। या आई थिंक कि ये शादी से पहले अच्छी दिखनी चाहिए थिंग एंड द होल कि अपीयरेंस अच्छी होनी चाहिए, लेकिन एक्चुअली दे वांट के भी परिवार में चले। आई बिलीव द होल बिलीव जो कि उन्होंने ना एक्सप्लिसिटली नहीं बोला किसी ने भी वाज दैट कि वी कैन शो टू द पीपल एंड टू द सोसाइटी दैट वी हैव brought like we have made a successful sale, like we have struck a successful and a profitable bargain, something like that, राइट द होल कॉन्सेप्ट मतलब जो भी रन कर रहा था द होल इंडस्ट्री ऑफ मैट्रिमनी, और फिर उसके बाद में कि लुक्स अच्छे होने चाहिए एंड ऑल, एंड लास्ट में हाइपोक्रेसी ये थी कि दे सेड हमें तो सिर्फ परिवार में चलने वाली लड़की चाहिए, समथिंग लाइक दैट, राइट। बट दे नेवर मेंशन्ड इसको एक्सप्लिसिटली और एक्सेप्टेड कि दूसरों को दिखाने के लिए ऐसी होनी चाहिए लाइफ। या वी कैन गो अहेड। Shahana. नहीं मतलब I was just thinking that we are also finding this very disgusting, I mean quite terrible and difficult to accept. But I just want us to, I mean, one is I actually know people who go through real depression, and even this girl's face, and I was feeling sad even for that crappy guy, because just this rejection on the basis of appearance or salary or whatever, right? So I just feel like there's enough of rejection in the world, and I feel like it's very depressing, it's very sad, really, and I feel like what are the criteria, but it's also true. And that's why I feel Parivartan should bring in its discussions, make it personal, no? Like, let's make it real. Let's not say these are other people, right? But people do use judgment. I mean, they do choose, if not to marry at this stage, hopefully, but to date or to think of being together, you do appearance is something which people take into account. People, these are the calculations, as somebody, I think whether it was Anshika or somebody was saying that people are, or whoever, I don't know, maybe Shreyasi, dating apps wala jo keh rahe the aap, that initially when dating apps started in Parivartan discussions also, it came out actually that dating apps were not used for people who wanted to marry. When they wanted to marry, they went to shadi.com or whatever there was that time, and then
dating apps were just purely sexual, or they were not for as if they would lead to a marriage. So those were early days of dating apps. I'm talking about maybe even 8, 10 years ago. But uh, but now I think this thing of appearance and the rejection and this kind of structured rejection, you put yourself out there and then this kind of rejection on this basis, and in this case of course for marriage where families are involved, so there are many more parameters of rejection. Family अच्छी नहीं है, whatever past history, जैसे तैसे. It's very sad. I just feel like that is really leads to huge distress amongst both boys and girls, I think. And We started doubting ourselves. Is there any flaws in our that why we are getting rejected so many times? So yeah, yeah, it's very depressing. yeah. So I think that is something we must, and the but also that we also know do keep appearance and some criteria, right? You also, whether you're dating a man or a woman or whatever, you will have certain criteria, and many of them are like this also. So it's also, I don't know, it's important to make it personal and to question ourselves also in Parivartan, I think. Manan. एक छोटा सा पॉइंट है फिल्म मेकर की मतलब तारीफ करना चाहता हूँ कि जो वो कैरेक्टर था 37 इयर्स का जो आया था इंसान उसके काफी सारे क्राइटेरियाज थे जिससे वो लग रहा था कि उसको बहुत कुछ अच्छा चाहिए अपने पार्टनर के लिए बट उस फिल्म मेकर ने दोनों साइड दिखा रखे हैं कि उसको भी रिजेक्शन मिला है मैंने बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज देखी है सब में या तो कैरेक्टर अच्छी तरफ जाता है या बुरी तरफ बट ही वाज काइंड ऑफ मिक्स ऑफ बोथ दैट वाज अ गुड थिंग इन दिस मूवी Anusha. या आई वांट टू मेक छोटे छोटे पॉइंट्स मैं एक ही में एक साथ बोल देती हूँ. फर्स्टली, if we talk about क्या solution होगा या what should we do about this, I think it's very difficult because somewhere we all have internalized ये चीज है, because we have grown up in this society and we have seen such things happening around us. People who we look up to, our own parents, they sometimes do these things. So we kind of emulate ये चीजें देखते देखते, so it becomes like a psychological bias in our minds, and it influences us. Plus जैसे somebody said कि if parents are liberal, still grandparents का pressure रहता है. तो um, I'm confused. How should we change this? Because वो generation gap रहेगा, and yeah, no matter how much you try, there is a point you give up because it becomes mentally frustrating for you. It starts affecting you. And so I think more than learning, we should unlearn stuff. I'm realizing that we have learned a lot and half of the things are wrong. So at this point, more of unlearning is required. That's it. Anushka. Yeah, so I was thinking of, like Shahana said, I mean, we have to look into our own lives also. And I realized I have a lot of examples that are so similar. I mean, even in my immediate family, my brother's girlfriend, whom, they have all accepted, but and they love her. It's not like they find any faults in her, but they keep reminding her, health का नाम देके कि that she needs to lose some weight because उसके health के लिए सही नहीं होगा. Plus she has PCOD, and सबसे ज़्यादा डर हो जाता है fertility का कि कहीं बच्चा नहीं हो पाया तो कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी. And I have to keep reminding her, my mother, that उनका तो उतना इशू है भी नहीं, and अगर होता भी तो we have examples in our own family where women could not produce, and that's completely okay. Even I don't want to have children. तो मुझे भी ऐसे ही फोर्स करोगे क्या बच्चा पैदा करने के लिए? Plus, when I was in my Tinder and Bumble phase, I remember realizing at one point that I had internalized that prejudice, and I was somehow rejecting guys on the basis of their height. And when I realized it, it was such a huge shock for me because मुझे समझ नहीं आया था मैं क्या करूँ. Because on one hand it was something that was my own choice and something which was important for me to have romantic feelings for the person and for that attraction to be there. But then I also realized that it's extremely wrong and it's a horrible bias.
and I mean it was like बहुत ज़्यादा वो अम, दुविधा टाइप हो गया था कि मेरे अपने प्रिंसिपल्स के साथ ही मेरे अपने चॉइसेस नहीं जा रहे, एंड हाउ डू आई डील विद दैट इंटरनलाइज्ड बायस. Tara. I've already raised what I wanted to say, but this movie, I mean, it's not to me because also I think the issue one has been dealing with it never changes. So what kind of looks at the same problem like it becomes a cliche. The thing is that, but if you end discussing this, right, you also realize that the world has to some extent changed. It has never changed. Uh, basically, what I found interesting in the film is that most of the, I mean, either men and women, especially men, they are full of contradictions. I mean, they will acknowledge also there is a certain kind of self-perception, and to basically imbibe that kind of self-perception. For example, the man says that this could be the reasons that I have been rejected. It's very real, right? And if he is sounding very confident in his rejection of women, but he's under that trauma also. So the film actually brings out these contradictions. So like one nice thing that he said is that sometimes pata nahi chalta ki why do you dislike a particular person. Like you can't pinpoint. Many times basically cite out apparent reasons for rejecting someone, right? So it's like it is so deeply internalized that we don't know what is the problem. Like why you dislike a particular person's face. You don't. He or she may be a complete stranger, right? So things that I think the film brings out the contradictions. So it's not really blank black and white kind of thing. But in our society, and also in largely in every society, there are plenty of people who do not find a room to make their own choices in terms of selection. एक तो ट्रेनिंग भी नहीं है कि अदर सेक्स के साथ कैसे फ्रेंडशिप्स करना है. So all of those things are also there. So there is no social life in which this kind of spontaneous interactions could happen. That's why people fall back into matrimonial sites and agencies. So and there are many people who have been helped also by these sites and apps and all these things. So we also need to recognize that because सबके लिए मुमकिन नहीं होता कि जाके बोलो I like you, I want to get married. It's not possible in our society, especially in our society. Because even if you look at relatively more liberal rural societies, the moment a boy and a girl is seen hanging out, the villagers will come and say you should get married. Why are you basically loitering around? Right. So marriage sometimes becomes a convenient way of getting together, even if they don't actually desire marriage. Right. So it for many. I don't know. Have you seen the film Door? Yeah. Door. Very interesting line there because the girl says it's her marriage which has given her more freedom. Even within the marriage, there is a lot of over the daughter-in-law and all those things, but husband treats her in a better manner. So she says that earlier I couldn't do anything, but once I'm married, I can dance to the Bollywood numbers that come on radio, blah blah, and all these things. So she does, in that sense, get a sense of liberation within marriage, which was not allowed to her outside of it. So for many women, actually, especially traditional setups, say, marriage can be seen as enhancement in their status as well as experience of relative autonomy. So those are also factors that were indicated in this kind of thing in the film. Vikas. अभी किसी ने I think
चेंजेस के बारे में बात की थी, तो मैं उस पे ही कहना चाहता हूँ कि जो पुरानी जनरेशन जा चुकी हैं, हम उनको मतलब चेंज नहीं कर सकते हैं। सो वी हैव टू ब्रॉड अवर मेंटेलिटी एंड थिंक in positive ways rather than focusing on what your like older generations are saying. And we have to think like open our thinking, and we have to like bring change in our friends and in this society, like our present generation. And then only we can grow together as a nation and abolish all these kind of ill practices. That's all. Add one more thing. Also, what the film at the end, of the day, there are problems in marriage, making and all these things. वो तो है marriage के अंदर as we move towards marriage. But I think we have had a lot of discussion, and I think Anushka and Shruti also pointed out कि family is the primary unit of a society, right? So as long as there are families, there are going to be marriages, right? So there is also that fundamental issues, that structural issues, right? No matter how much romantic situation in which you are getting married, at the end of it, you are entering into a social contract, into an institution which is much greater than your individual power to change it. So one has to somehow find relevance, but at the same time also understand the strength and power of this institution. Right? While that man was saying, sometimes I want to get married, sometimes I don't want to get married. I like my freedom. It is true for many people, I think, most of the people. But anxieties bhi itna hai ki that you want to get married because the society otherwise doesn't allow you to retain your your autonomy, your So sanity. many, so many abandoned women pretend to be married. They'll wear the marriage symbols and they'll stay like that because it gives you some leeway. So there are many reasons why people marry. So because it's not just about rejecting evil practices. इसको evil नहीं मान रहे लोग. इसमें बुरा जो है वो देखने की जरूरत है, बट एट द सेम टाइम जो लोग इसका रास्ता अपना रहे हैं वो अलग अलग कारणों से अपना रहे हैं. So we can't just reject. I mean, just we have to understand it. Actually, I think that was the purpose of. Sorry, Tara, you were saying something. No, yeah, it's fine because marriage has been going on for ages, and matlab what is fashionable or not within marriage changes according to time, but matlab एक standard norm के हिसाब से marriages ऐसे ही होती आई हैं. So the institution has a very, very deep history, and I mean, as long as we have to acknowledge that it exists in the society. Yeah. Right? If for few individuals it may not exist, but for society at large it does exist. So उसको मतलब याद रखते हुए, I think we also need to understand some of these issues. Yeah. Sonali, then I have a point to make. And then we should wrap up, I think. या सो आई वाज सेइंग कि मुझे एक सीन के बारे में बात करनी थी जो मुझे अच्छा लगा कि उसमें वो जब वो प्रोफाइल फोटो खिंचवाने जाते हैं तब लाइट इस तरफ होती है लेकिन वो उस तरफ कर देते हैं जिससे उसके फेस और फेयर लगे. तो आई थिंक दैट सीन आई फेल्ट वेरी गुड. एंड जैसे विकास ने बोला कि पहले के नैरो माइंडेड थे, अब हमें ब्रॉडन कर लेना चाहिए आज की जनरेशन को इस बारे में. तो आई वांट टू से कि हम सबसे ज्यादा अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हैं एंड जिसके साथ हम रहते हैं उसके ही थोड़ा इन्फ्लुएंस हो जाता है, हम उनके जैसे ही वैसे ही सोचने लगते हैं. तो आई थिंक आई एम लाइक दैट क्योंकि जब वो सीन आया था कि आपको जब वो कह रहा था कि लाइट कपड़े पहन के जाओ रिफ्लेक्शन आएगा आपके कैरेक्टर में, तब मैं खुद सोचने लग गई नहीं यार डार्क पहननी चाहिए ज्यादा गोरी लगेगी. सो दैट इन्फ्लुएंस लाइक जैसे मेरी फैमिली सोचती है वैसे ही मैं भी सोचने लग गई. सो आई वांटेड टू टेल यू अ इंसिडेंट लाइक मेरी फैमिली में क्या होता है. लाइक जैसे माय मॉम ऑलवेज सेज दैट I was 24, my dad was 28 when they get married. So 24 is like a
उस एज में हो जानी चाहिए। तो आई ऑलवेज से यार मैं तो उस टाइम पे ग्रेजुएशन भी नहीं कंप्लीट होगी मेरी, मैं शादी कैसे करूँ? तो आई जस्ट से कि मैं तो 30 के बाद ही करूंगी, अगर नहीं हुई तो नहीं करूंगी, मैं यहीं बैठ के रहूँ, मैं घर पे ही रहूंगी। एंड ये भी बहुत आई थिंक सुनने को मिलता है कि खाना खाना बनाओ, ये काम आना चाहिए, वरना वो ससुराल जाके क्या बोलेंगे, तुम्हारी माँ को ही बोलेंगे कुछ सिखा के नहीं भेजा, ये नहीं। तो आई थिंक ये तो आई थिंक ये एक मेंटालिटी रहती है आज के जनरेशन में बहुत सी। एडिंग ऑन टू सोनालीज पॉइंट, एक स्टूडियो वाला सीन था जब वो अपनी मदर को कहती है, मम्मी ये तो असली लग रहा है, मैं ब्रिज के पास खड़ी हूँ। तो दैट वाज गिविंग अ फॉल्स होप कि इसमें मेरे दांत नहीं आने चाहिए, मैं यहाँ पर सही में लग रहा है ब्रिज के पास खड़ी हूँ। तो फॉल्स होप वाली चीजें बहुत होती हैं। um, I just felt in between कि like ये societal norms, criteria, conventions क्यों हैं? Like मुझे भी बचपन से like सिखाया गया है, बताया गया है, but after like a certain point, like now at my age, I know कि ये है, but ये गलत है। Like अगर मैं अपने example लूँ, I guess in my 11th standard I was very fat. Like I was at time 90 kgs. तब मुझे मेरी हाइट भी कम है, तो मुझे मेरे ग्रैंड पेरेंट्स में से किसी ने एक ने बोला कि लाइक लूज सम वेट, तेरी हाइट भी कम है, तेरे को चश्मा भी लगा हुआ है, तू मांगलिक भी है, तो तेरे से शादी कौन करेगा? लाइक they wanted me to fit in to that picture of an ideal girl. मतलब ये आइडियलिज्म क्यों है, सोसाइटल नॉर्म्स क्यों है, मुझे आज तक समझ नहीं आया है, और ना मुझे लगता है मुझे कभी समझ आएगा। Although no one is able to fit into that box, right? Like still there are expectations. फिर भी That's the रिइटरेशन reason. होते रहता है उस चीज का, आई थिंक भले कोई फिट इन ना कर पाए, पर स्टिल वी सी, मतलब हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आज के सेंस में जब हम बोलते हैं कि माय पेरेंट्स लिबरल हैं, तो मतलब मैं जैसे समझती हूँ कि अगर मेरे पेरेंट्स लिबरल हैं तो कहने का मतलब ये है कि वो मुझे पढ़ने दे रहे हैं, वो मुझे नौकरी करने दे रहे हैं, पर एट द एंड ऑफ द डे जब मतलब मेरी माँ मुझे कहती है कि अभी आई डोंट केयर ऑफ योर मैरिज, जो करना करना, तुम्हारी मर्जी है, पर मतलब आई नो कि वो एज आएगा और शी विल पिन पॉइंट दैट, ठीक है, और वो सारी बातें फिर से रिपीट होंगी मेरे लिए भी जैसे बाकियों के लिए होती हैं। तो उस और मतलब उस समय जेंडर रोल्स आ जाएगा कि मतलब आप कितनी ज्यादा केयरिंग हैं, आप कितनी ज्यादा मतलब आप एज अ वुमेन आप होम मेकर हैं और केयर टेकिंग हैं, और जो भी इमोशनल रोल्स भी जो आपको प्ले करने पड़ते हैं एक कॉन्जुगल रिलेशनशिप में, वो भी आपके अंदर है कि नहीं उस समय। ठीक है, एजुकेशन वगैरह तो एडिशनल होना ही चाहिए, पर ये एज अ वुमेन यू शुड नॉट ऑप्ट आउट फ्रॉम दिस, राइट? तो वो हमेशा रह जाता है, द रोल्स डिफाइंड बाय सेक्स। So that is the point I wanted to make. Yeah. Akshit has got his hand up. मैं श्रुति की बात कोई पॉइंट आउट करना चाहूँगा। लाइक श्रुति ने कहा जैसे 90 केजी वेट है, ये तुझसे शादी कौन करेगा, जैसे ग्रैंड पेरेंट्स ने कहा, तो मैं इसकी बात से एग्री करता हूँ। लाइक ग्रैंड पेरेंट्स ने जो कहा, एक हद तक अब हम जैसे ये डिस्कशन कर रहे हैं कि मेरे हिसाब से 50-60 साल पहले ऐसी चीजें नहीं होती थी कि जैसे हम अब सोच रहे हैं कि ये सब गलत है। बट अब लाइक अगर मैं ग्रैंड पेरेंट्स के पर्सपेक्टिव से या पेरेंट्स के पर्सपेक्टिव से देखूं, तो उन्होंने इतने कहते हैं ना नाजों से पाला, इतने प्यार से पाला है, तो ये चाहेंगे कि हमारी लड़की कल को दुखी ना हो, या कोई इसके मुंह पे ऐसा ना बोल दे कि ये बहुत दिल पे लेके बैठ जाए। तो पेरेंट्स कई बार ऐसा हो जाता है कि खुद बुरा बन जाते हैं कि तू मोटी है, तुझे पतला होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो, कि उनका भी कई बार मैं सोचता हूँ कि हम सारी चीजें अपनी मनवाए जा रहे हैं कि क्यों मैं ऐसा ना करूं, क्यों मैं ऐसा करूं, क्यों ना करूं। बट अगर पेरेंट्स के पर्सपेक्टिव से देखूं, मैं मानता हूँ कि कईयों को इतना नॉलेज नहीं होता, मतलब इतनी हाई नॉलेज नहीं होती। बट अगर मैं ग्रैंड पेरेंट्स पेरेंट्स को देखूं तो उन्हें पता ही है आगे हमारी जनरेशन है, हम नहीं चाहते कि मेरी पोती या मेरा पोता कल को कोई उसके मुंह पे रिजेक्ट कर दे। मैं समझ सकता हूँ कितना गंदा फील होगा उसके बच्चे को या हमारे बच्चे को, किसी को भी, कि वो कई बार कुछ बच्चे बहुत सेंसिटिव होते हैं, वो नहीं सह पाते। तो ग्रैंड पेरेंट्स कई बार ग्रैंड पेरेंट्स पेरेंट्स खुद बुरा बन जाते हैं कि तू मोटी है, हमें नहीं पता, तेरा खाना बंद कर देंगे, तू पतली हो, ये वो, कि कल को आने वाले 10 साल या 20 साल बाद उनकी लड़की या उनके लड़के को ऐसी कोई दिक्कत ना हो कि समाज, क्योंकि समाज, हम लोगों से समाज बनता है, तो अब हमें इस समाज में फिट भी होना पड़ेगा। अब ऐसा तो है नहीं एक ही बंदा बिल्कुल ही प्रॉपर ये बिल्कुल
मतलब सब कुछ ही मतलब लक्ष्मीबाई या कुछ भी ऐसा बन जाए कि सब कुछ बदल दे, इतनी ये इजी नहीं है इतना चीज, और हर किसी की अपनी लाइफ है, कोई हर कोई इतने डीपली जाना भी नहीं चाहता। तो सब बस यही चाहते हैं कि बस क्या समाज के साथ चलते रहे, ज्यादा कहते हैं ना कि ज्यादा समाज से हटके भी नहीं चलना। तुम्हें जैसे मेरी मम्मी कहती है कि तुझे भी इसी समाज में रहना, हमें भी इसी समाज में रहता है, तो उसके भी कुछ रूल्स हैं, जो ये एक रियलिटी है, जो ये चीज चल रही है, तो कई बार हमें वो चीजें भी फॉलो करनी पड़ती है। क्यों? और ये अभी नहीं, मेरे हिसाब से 5-7 साल या 10 साल तक ये चीजें चलेंगी। लड़की छोटी है, हमें नहीं करनी शादी, या लड़का थोड़ा काला है, हमें नहीं करनी। इसके पेरेंट्स के पास प्रॉपर्टी कितनी है, पेरेंट्स सबसे पहले चेक करते हैं कि ये लड़के की प्रॉपर्टी कितनी है, या लड़की के घर वाले कितनी मोटी पार्टी की कितनी डाउरी देंगे। तो मेरे हिसाब से फ्लॉ सब में है। बट जैसे ग्रैंड पेरेंट्स पेरेंट्स तो मेरे को लगता है कि उनका ये भी पर्सपेक्टिव हो सकता है कि हमारा बच्चा कल को दुखी ना हो, या फिर कोई से बुरा ना कह दे, या फिर इसकी शादी में से कॉम्प्रोमाइज ना करना पड़ जाए, जैसा ही चाहती है। मेरा बस यही कहने का एक मतलब श्रेया। श्रेया। हाय सो मैं एक पॉइंट पे, जैसे अभी प्रेरणा ने जब बोला था, मैं उसके कंटिन्यूएशन में बोलना चाहूंगी कि समटाइम्स मतलब मुझको जो आजकल एक चीज फील होनी चाहिए, लग रही है कि हमारी एजुकेशन कहीं ना कहीं एक तरीके से इन्वेस्टमेंट की तरह यूज होगी बाद में। बिकॉज समटाइम्स आई फील कि आज हमें जितना पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि अगर इतना ही हमको, अगर हम लिबरल फैमिलीज के पार्ट हैं तो हम जो करना चाहें, जैसे एजुकेट होना चाहें वो कर सकते हैं। बट समटाइम्स आई हेयर दी स्टेटमेंट्स कि अरे तुम अभी मास्टर्स करना है, उसका पीएचडी करोगी, भाई पढ़ते ही मत रह जाना, अपना जॉब का सोच लो, इससे बेटर डू समथिंग प्रोफेशनल। बिकॉज ऑब्वियस सी बात है कि हम लोग जो अभी डिग्रीज ले रहे हैं, कई लोगों की डिग्रीज वो प्रोफेशनल डिग्रीज नहीं है कि हमें तुरंत बाहर जाके जॉब्स मिल जाएंगी, स्पेशली व्हेन द जॉब मार्केट इज श्रिंकिंग। सो ये चीज सुनने को मिलती है, अरे इसके बाद तुम कोई प्रोफेशनल डिग्री कर लो एंड यू शुड थिंक अबाउट योर फ्यूचर, एंड वी ऑल नो व्हाट इज फ्यूचर है, व्हाट डू दे मीन बाय फ्यूचर। सो समटाइम्स आई फील लाइक कि हम लोग कहने के बहुत लिबरल फैमिलीज के पार्ट हैं, बहुत हम लोग बोलते हैं हम बहुत मॉडर्न फैमिलीज के हैं, दे अलाउ अस टू स्टडी, सब कुछ वो प्रोवाइड कर रहे हैं, वी कैन वेयर, we can choose, we can make decisions, but sometimes there are some like जो कहते हैं ना hidden conditions जो होती हैं, so they are still there, which I feel. एडिंग ऑन टू श्रेयास पॉइंट, और जैसे कि अभी बात हुई है डाउरी की, तो डाउरी इज स्टिल परसिस्टेंट इन द सोसाइटी। बस उसको अब डाउरी का नाम नहीं दिया जाता, एज अ गिफ्ट दिया जाता है बस। कार, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, ये गिफ्ट होता है, बस उसका नामकरण बदल दिया कि ये डाउरी की जगह गिफ्ट है, बट इट इज स्टिल परसिस्टेंट इन द सोसाइटी। So like प्रेरणा। patriarchy is deep rooted even if the time continues. प्रेरणा Yes. followed by Anushka and Sonali. Point of view, what time was Tara, you're not audible. I think the time for us to wind up. 6:30 होने Yeah. वाला है. Also, people are. I, people are also dwindling now. हाँ? बहुत सारे लोग चले गए हैं. Yeah. I think we should begin to wrap up after maybe if you can have, if you have short interventions, Anushka and who else, Sonali. We can continue our discussion also. Anushka. Yeah, I had like very short point. So, whenever I tell my mom कि मुझे शादी नहीं करनी and stuff like that, and या फिर अगर करनी भी है तो ना कोर्ट मैरिज करके हटाओ, ऐसा क्यों इतना शो करना है, तो my mom just says every time कि जितनों के यहाँ जाके खाया है उन सबको खिलाना होगा ना, and it has to be this, this show of what we are doing and like how well off we are, and not that we are even well off, but इतना परसेप्शन की बात हो जाती है, हमारा परसेप्शन और सोसाइटी का परसेप्शन. एंड वन लास्ट थिंग इज दैट आई वॉच्ड सम डॉक्यूमेंट्री, इट वाज अबाउट a completely different thing, but something that a woman said in that, it stayed with me, is that even if my child learns about these prejudices from the outside world, the good thing is that they will not learn it from me, and I'll make sure that when they learn something like that and come back home, I will make sure to correct them and say that this is not what we will let you learn in this house. Great. And who is there? Sonali and Prerna. Yeah, मैं
अभी का ही बस इंसिडेंट बता रही हूँ कि अभी हम ये डिस्कशन कर रहे हैं तो माय मॉम जस्ट केम एंड सेड व्हाट आर यू डिस्कसिंग, ये कोई अभी बात करने का टाइम है? एंड यू सो आई सेड अभी नहीं तो कब? सो थैंक सो आई जस्ट वांट टू थैंक्स टू परिवर्तन फॉर प्रोवाइडिंग अ प्लेटफॉर्म लाइक दिस. हाँ प्रेरणा हाँ, मैं जल्दी से बात खत्म करूंगी। मैं ये बोल रही थी कि हम कुछ मिस्टेक्स को देखते हैं अपने अंदर, जो भी सोसाइटी के अंदर स्ट्रक्चर्ड है कि ये हमारे अंदर मिस्टेक्स हैं एज इन। तो कुछ चीजें मोटा पतला होना कभी कभार आपके हाथ में होता है, आप कर भी सकते हैं। तो आई वॉज बॉर्न डार्क और मुझे बचपन से मतलब आफ्टर आई न्यू आई वॉज अ गर्ल, मुझे दूसरी बात ये बताती है कि आई वॉज अ डार्क गर्ल। तो मेरे घर में बिकॉज आई नेटिवली कम फ्रॉम बिहार, और वहाँ के जो विलेज स्पेसेस में जब मैं जाती हूँ तो हमेशा ये बात होती है कि कढ़िया लड़की नहीं चाहिए हमें, कढ़िया इन द सेंस जो कोयले जैसी काली हो। तो दैट इज सिनोनिमस टू व्हाट आई लुक लाइक। तो उन्हें अपनी बहुओं के रूप में वो नहीं चाहिए। तो मैं बोलती हूँ, मेरी दादी लगती हैं, वो चाची लगती हैं, जो भी है, तो वो मुझे कहती हैं कि नहीं नहीं बेटा, तुम्हारे लिए तो हम लड़ लेंगे, पर हमें अपनी बहुएं कड़ियां नहीं चाहिए। तो आई हैव बीन ग्रोन अप लिसनिंग टू दिस, एंड आई डोंट वांट टू डिसरिगार्ड किसी की सोसाइटी में ये है और बड़े लोगों की बात है, ऑब्वियसली मतलब दिस इज इनएविटेबल, किसी फॉर्म में इनएविटेबल हो चुका है ये सारी चीजें। बट कुछ चीजें आप चेंज नहीं कर सकते, और क्या मतलब मैं उसको अपने अंदर का एक मिस्टेक मान के चलूं कि मतलब आई एम डार्क सो इट्स अ मिस्टेक आई वाज बोर्न विद। सो दैट इज व्हाट आई वांटेड टू पॉइंट आउट। Yeah, I will just, I have to say something. I think we should just finish. One is, I think this, what Akshit said, Akshit is here, no? This thing of कि बड़े लोगों की बातें और आप सब माने, the thing is, it's also, मैंने आर्टिकल 19 लिखा है, पता है ना आर्टिकल 19 क्या होता है? Right to freedom. So it's a very basic freedom, no? That you are agreeing that your very basic freedom is violated. So to the extent that we are complicit in this decision, मतलब हम अगर ये decision के part हैं, तो भी हमें बिल्कुल सोच समझ के ये सब चीजें enter करनी चाहिए। और जो बड़े बूढ़ों का, the thing is that when a child grows up, it's really important for children to realize that they are independent, and it's very very difficult for establishing that independence while loving your parents. So practices तो हमारी तो इतनी बढ़िया heritage है ना, also of caste system and many inequalities. Patriarchy is not just a word, no? It's not just a cool big word. We are enacting it. So I think we do make compromises with basic principles, लेकिन हम कम से कम खुली आंख से करें। ऐसा नहीं कि, because I'm sure your parents, your grandparents, they will want you to be happy. मतलब कोई भी principle is not worth it, ना? तो I feel like the basic principles की अगर हम बात करें तो मैं तो fundamental right की बात कर रही हूँ यहाँ पे. Establishing yourself as a citizen. No? I mean, not just in relation to other people, but as yourself, right? These are really not, ये सिर्फ किताबी बातें नहीं होती हैं. मतलब I think for most of my friends, I think it took them up to 45, 50 to realize that they were persons and not mothers and wives and girlfriends and daughters and whatever. But I'm sure it's true of men as well. I think ये जो बातें हम, मतलब I think हम अपने families को persuade करने के बहुत तरीके जानते हैं, ज्यादातर लोग. अगर हम कोई चीज बहुत जानते हैं और if they know that it will make you happy, most families will come around, you know. I think. So I think ये सामाजिक प्रिंसिपल के नाम पे, अब समाज में तो बहुत सारी प्रथाएं हैं, तो हमने तो बहुत सारी प्रथाओं को छोड़ दिया है, मॉडिफाई कर दिया है. So why does this continue? That's what I'm really sort of intrigued by, right? So I'm saying that you are your own person. You are a person. Like I would tell my students also that you must remember to be a person. And that's like the biggest thing that we can be, which means that you make your decision, you judge.
for your life. बुरा भला सब आपका है ना, उसमें डर भी लगता है, लेकिन और लोग ताने भी कहेंगे, लेकिन यू लिव ऑन योर ओन टर्म्स ना, जैसे भी आप जिसमें भी खुश हैं. सो आप खुद से लाइक दिस पुअर गर्ल वाज खुद से अरेंज कर रही थी एंड शी वाज रियलाइजिंग कि सेटअप में तो इन दैट एटिपिकल फैमिली शी वाज इन nobody would accept that, or if she's being frank about having epilepsy and all that, all these are definite no-nos, you know. So it's a very cruel setup, and why should we carry this forward is my but I'm not saying about not, I mean many people do it, but if you have a choice कि अच्छा यही करना है, यही principles पे choose करना है, you should negotiate about all that, है ना. It is your life, no, finally, and you're literally, you're really going to be literally sleeping with the person. It's your body, your life. So I think that is something with that autonomy from family and whatever, in so many ways we do away with that. We break family rules. कोई smoke करेंगे, कोई drink करेंगे, कोई कुछ करेंगे, कोई कुछ करेंगे. So I think in that sense, I'm not saying without doing, but you know, negotiate, figure out, create a space. Like be a person, no? Also, just adding on to, not to diss you guys, but अभी जो शादी का ट्रेंड है ना, fat Indian wedding वाला, so children also pay, like, you know, exert a lot of pressure on parents to make it happen. That is why the family is something that is useful in both way, for both uh, parents and children, and we are exploitative of each other actually, which if we realize in the family. So it is never about the older generation putting pressure on the junior generation. It can be the other way around also. Yeah. Especially अभी वो जो है ना, I am a homemaker by choice. Being a housewife is a choice. I'm sorry, मतलब it can't just be a choice. You can't just say that it's a modern choice. There are many things that go into making that choice, and we, in that sense, what Shahana is trying to say is also that we are complicit in many ways. जो मतलब रजिस्ट्रेशन से काम चल जाता है थोड़ा, मतलब यू नो फ्यू थाउजेंड स्पेंड करके फन पार्टी हो सकती है शादी का. आजकल पीपल वांट लहंगास ऑफ लाइक 1 लाख 2 lakhs worth just for like few hours. So and for that you always go back to your family. Yeah. So I mean money comes with the relation, na? And yeah, yeah. So independence also comes at a cost that way. It, you know. Have to remember. Family is basically an economic unit, ना. तो मतलब उसमें प्यार होगा, दुख दर्द होगा, सब कुछ होगा. But the most difficult part is this dependency, which is based on our monetary economic relation, basically. चलो. Okay. Thank Maybe you, we can. Parivartan. One of the complaints about Parivartan discussions was what is our takeaway. So I think I would request everyone who stayed back to actually figure out what is it that we learned, or maybe write it up in a few lines. Nahi, Tara? It'll help with the group also. No, I mean I'm not saying in a kind of, it doesn't have to be definite, but or you can summarize the discussion, and through that some of the points can come out. Maybe we can circulate a document in which Yeah. can add their points. Everyone can add. Yeah. I'm not saying a corporate type of takeaway, but I'm saying that we must know where we have moved. ये past कुछ years में ये वाली बात आई है कि हमारे discussions हुए, फिर हम क्या समझ बनाए, because I think वो समझ जरूरी है. So यहाँ पे एक भड़ास निकालने वाली बात भी है, उसकी भी जगह है. Sorry, हाँ. Tara is trying to speak something, but उनकी आवाज नहीं आ रही है. अच्छा, sorry, Tara. Yeah. खत्म करते हैं, but before we go away, कल have you your voice
Tara, you not audible. Talking about the meeting that we are going to have tomorrow, na? Tara, I'll inform you about that. Okay. I'll give you the follow-up. Mention it from onwards. I'm not available because I have a discussion with St. Stephen's College. Okay. Just wanted to inform. Okay. If not tomorrow, I'll let you know. We can have it on on Monday. Monday also. Thank you all. All right. I think with this we come to a conclusion. I mean, to the end of the discussion. So I would like to thank you all for attending and participating in the discussion and the whole screening. Stay safe, please, and stay healthy. Thank you, Parivartan. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you everyone. everyone. Ma'am का कुछ खास रोल नहीं है. Take हाँ. care. You too Thank take you, care. ma'am. Bye. Thank you all.